हेलो 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 हेलो, क्या बोल रही पब्लिक? भाग्यश्री द चैट, अमन वेलकम ब्रो। रोमियो मेरे भाई, तेरे को मजाक नहीं कर रहा, मेरे को तेरी इतनी याद आ रही थी आज दिन में, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा याद आ रही थी, बहुत ही याद आ रही थी। तू एकदम स्पेशल कनेक्शन है मेरे छोटे भाई मेरा। अरे आदर्श यार, वेलकम बैक ब्रो, वेलकम बैक। थैंक यू फॉर द लाइक, थैंक यू सो मच फॉर द लाइक। डिस्कॉर्ड पर आओ स्ट्रीम सेट करवाने के लिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो चल रही है। वीडियो तो स्ट्रीम स्टार्टिंग की वीडियो थी ना भाई, स्ट्रीम स्टार्टिंग की वीडियो थी ना, ऐसा तो मत करो यार। आई एम नॉट योर फोन बिकॉज वी आर ब्रदर्स, योर ब्रदर ब्रदर, माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर यो। क्या कुक कैरेक्टर फ्रॉम द डंजन? क्या बोल क्या रिया है ये? अरे अमनदीप वेरी फर्स्ट एज यूजुअल इन द चैट। यो वेलकम गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग द लाइक। आज शुरू करेंगे अपना अमेजिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ सुमेरु। आज कैसी तबीयत है अमनदीप आपकी? वैसे कैसे हो आप? क्या बोल के है? स्टार्ट विथ एक्स वाई। शियांगलिंग कैरेक्टर, शियांगलिंग वो कुक है, वो शेफ है गेम में, तो क्या शियांगलिंग बोलना नहीं जम रहा होगा क्या? पहले रिसेंट में खुला हुआ था, रिसेंट में अब भी गलती से स्टार्ट कर दिया था मैंने, पुरानी आदत है लरे, इसीलिए। अरे यार वो कैसा है ना, वो मल्टी स्ट्रीम कर रहा हूँ ना गाइज, आई एम स्ट्रीमिंग ऑन ट्विच एज वेल, सो डू गो चेक आउट माई ट्विच चैनल एंड फॉलो मी देयर एज वेल, बिकॉज वहां पे अपने को जरूरत है थोड़ा सा और स्प्रेड करने की चैनल को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भूलना नहीं। दबा दो, ठोक लगा दो, स्ट्राइक लगा दो, लाइक दबा दो, सब्सक्राइब दबा दो। कौन कैसा मीम है बे वो इतने जम के चिल्लाता वो भाई, हद है। अच्छा गाइज, मेरा ये चेक किया क्या तुमने? स्टोरी अपना ये लाइक इतना खास नहीं था जितना सीओडी वाला वगैरह था, ऐसा लगा मेरे को, बट अच्छा था कुछ उसमें, लाइक दोनों शॉर्ट्स क्रिएट किए थे मैंने, तो हाउ डिड यू लाइक इट? डिड यू चेक इट आउट एटलीस्ट? स्ट्राइक लगा दो, स्ट्राइक भी निकल गया मुंह से। सीओडीएम खेलना है यार, सीओडीएम की भी मेरे को थोड़ी इच्छा हो रही है, कॉर्डम खेलने की, पता नहीं। अरे वो डिस्क्रिप्शन में, द लिंक ऑफ द ट्विच चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइज। एक्सो लोगन इज हियर इन द चैट, ही सेज आई एम हियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अमनदीप इज बैक। अमनदीप, मैं आपको पूछा था कैसी है आपकी तबियत? अब सब चंगा सी भाई, स्ट्रॉन्ग पुत्र है, कुछ होना नहीं है इसको, बस थोड़ा आराम करना है। और एक्सो वॉज द माई फर्स्ट व्यूअर ऑन ट्विच, बी लाइक एक्सो, गो चेक इट आउट, फॉलो मी देयर। एंड ट्विच पे भी थोड़ा सा अपने को मिला तो और नोटिस में आएंगे अपन फिर वहां पे, और जो अननोन लोग है उसमें। ये क्या है, थोड़ा सा मैं मल्टी स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा मैनेजमेंट अभी भी कर रहा हूं मैं, यूज टू हो रहा हूं मैं, राइट। टू प्राउडर एंड सब्स टू कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी का कैसा था मुझे नहीं पता, बस लाइक ठुक जाना चाहिए, सब्सक्राइब ठुक जाना चाहिए चाहे आप ये करो या वो करो, वो वीडियो पे डिपेंड करता उसके। थैंक यू सो मच फॉर द लाइक गाइस, थैंक यू। आने से पहले इतनी खुशी। अब ठीक है, मैं बोला ना स्ट्रॉन्ग पुत्र है, एक दिन में खड़ा होकर भागेगा वो,
कल बेचारे को 103 बुखार था भाई। आपका नाम क्या है? बसंती ऐसा पूछ रहा है आदर्श। प्राउलर भाई, प्राउलर प्राउलर दबे पाव आता है, अटैक करता है, पता भी नहीं चलता क्या होके गया यार तुम्हारे साथ। कब तुम्हारे दिल में जगह बना ली पता भी नहीं चलेगा तुमको, पता भी नहीं चलेगा। कॉडेम खेलने के लिए हाथ खुजा तो रहे थे, बट यार सुमेरु इज लाइक टू गुड टू इग्नोर, नहीं रह पाऊंगा। और मैंने अभी क्या किया है कि बाकी काम पूरे दिन में रहते तो मैंने ऐसा कर दिया है कि स्ट्रीम पे ही जेंशिन खेलूंगा। तो सुमन था आदर्श, THA। थोड़ा वो कल एक्सो ने वगैरह ट्विच चैट पे कमेंट वगैरह किया था तो अच्छा लग रहा था। ट्रैवलर द ट्रैवलर नाम से है अपना चैनल ट्विच पे, जाओ उससे देखो, चेकआउट करो। फॉलो करना नहीं करना, लाइक करना नहीं करना, सब्सक्राइब करना नहीं करना, ये सब तो तुम्हारी इच्छा है यार। अपन फोर्स नहीं करते यार, अपन फोर्स नहीं करते सब चीजें, जमता है तो करने का भी। ला 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 प्राइमोजन कितने हैं? एक विश करने, एक विश कर करके जोड़ के अभी विश करेंगे भाई। 10,500 प्राइमोजेम्स की जो लगी है अपनी कि क्या ही बताओ, बहुत बुरा हुआ भैया। इनाजुमा के चल रहे ना अपने, ये बहुत दूर है, तो ये फिर आ गया। मैं भी लाइव करने वाला हूँ अभी, ठीक है। एक्सो भाई लाइव कर रहा है, बट दोनों को प्यार दो, थोड़ा देर इधर थोड़ा देर उधर। I slept for 1 hour yesterday and went to school, but on the bright side I completed 5 chapters, took me 8 hours. Oh my god bro, this is a hard working guy here. पढ़ंतु लड़का, वेरी गुड। कल मेरे को वो बोल रहा था कि कि वो 5 चैप्टर्स करने वाला है, और मैं समझ रहा था जेंशिन के कोई चैप्टर्स कर रहा है वो। ताना मार के गया वो मेरे को, बोले सिर्फ गेम ही नहीं होता, बोले सब कुछ, जिंदगी भी एक चीज होती है, स्कूल लाइफ भी एक चीज होती है, पढ़ाई भी कोई चीज होती है। गलती से हार्ड वर्क कर लिया क्या? चलो सही है ना ब्रो, सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। Propagate! I got you covered! Ow! As you wish, main Fräulein. ओ भाई इतने पावरफुल करते हो गए रे लोग मेरे कैरेक्टर। Adorn my night। इधर भाग गया। Wind strike! Check this out! भाई क्या खत्म हुआ है वो? कहाँ जा रहा है? यहाँ हूँ ना तबले में। खत्म खल्ला, तीनी तो मौका नहीं दिया। होमा क्यों रखा था वैसे मैंने? अच्छा वो डेंड्रो के ट्राई करने के लिए रखा था कल। सीधा स्ट्रीम टू स्ट्रीम ही खेलूंगा भैया जेंशिन, भले ही 4-5 घंटे खेलूंगा पर स्ट्रीम पे पूरा रिकॉर्डेड मटेरियल होना, पूरा मतलब पूरा होना। अनुभव नरवाल, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। कौन से डिवाइस में खेल रहे हो? मैं खेल रहा हूँ iPad mini 6
वन ऑफ द लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल डिवाइसेस फ्रॉम एप्पल, और मजे ही अलग है ये डिवाइस पे खेलने के। इसका फॉर्म फैक्टर ना ब्रो बहुत ही परफेक्ट है, पाम के साइज का। कॉर्डम वगैरह जो फोर फिंगर क्लॉ ऐसे गेम्स में तो बहुत मजा आता था। पेपर्स आर कमिंग क्या, चलो सही है। थैंक यू सो मच फॉर द लाइक। अनुभव, आप कौन सा गेम खेलते हो? क्या आप जेंशिन खेलते हो? मोस्ट प्रोबेबली जेंशिन देख के आए होगे, बिकॉज आई थिंक यू आर फर्स्ट टाइम इन माई चैट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर ब्रो। आईपैड भी लाइक इतनी भी तारीफ मत करो भाई, बहुत तारीफ करके पूल बांधा है मैंने इसके। मतलब मेरे को, मैं रिसर्च करके गया था बट यूज करके ज्यादा मजा आया। और ऊपर से कैसा है ना, आईपैड का कैसा है भाई, लैपटॉप पर, अच्छा लैपटॉप पर सही सही सही, जेंशिन क्या नाइस। मेरा लैपटॉप तो यार थोड़ा थकेला हो गया, मेरे पास पीसी भी नहीं है, अपन गरीब इंसान है, तो इसलिए Time to go. आईपैड पे ही खेल लेते हैं हम। तो इसका एक चीज कैसा है, तुम बड़ा वाला आईपैड लोगे ना तो उसमें क्या सीन है कि तुम थोड़ा फोटोज वोटोज ये सब लेना, थोड़ा पोर्टेबिलिटी, ये दो तीन चीजें ऐसी है जो कि मिनी कंप्लीटली सॉल्व करता है। और आईपैड में M1 की सीरीज चल रही, बट एप्पल मिनी में आईफोन की सीरीज चल रही। तो जो A13 या A15 बायोनिक चिप आई थी अभी, वो इसमें है, वो इसमें है जो कि एप्पल 13 में आया था अभी। तो वो सेम टेक्नोलॉजी करते एप्पल। आईफोन तो है ही मेरे पास, तो मैं बोला कि आईफोन तो लेना नहीं है अब, और यानी पीसी लेने जाओ तो अच्छा वाला डिसेंट ही लेंगे ना, तो 2-2.5 लाख 1-1.5 लाख का तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये क्या 50,000 में निपट गया था तभी, कॉर्डम स्ट्रीम करने के टाइम पे। ऐसा सीन हुआ वो। कौन से एआर पे हो अनुभव? आप कब से खेल रहे हो जेंशिन? बिल्लियों को खाना नहीं दिया रे बहुत दिनों से। तुम एक क्या टूर्नामेंट? AR 55 मंथ से, नाइस नाइस नाइस, रिच लोग। नाइस। भाई मैंने क्या किया पता है, सिंस यू आर प्लेइंग लॉन्गर देन मी, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 2 महीने पहले खेलना चालू किया, 2-2.5 महीने पहले, ठीक है। 2-2.5 महीने मैंने क्या किया, एक दिन 15-20 गेम डाउनलोड किया, 10-15 गेम तो किया ही होगा कसम से, और फिर सब एक एक डिलीट करते गया, और आखिरी में जेंशिन बचा। और मैंने गेम कुछ 6 महीने पहले वगैरह देखा था, तभी से मेरे को अपील किया था, क्योंकि मेरे को हर गेम अपील नहीं करता, बहुत कम ऐसे गेम है जो मेरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने ये देखा था बट मैंने खेला नहीं, बट जब मैंने ये खेलना शुरू किया उसके बाद मैं रुका ही नहीं, और 2 महीने में देख मैंने क्या किया। सीरी आइलैंड 100%, सुरुमी 100%, पूरा पूरा इनाजुमा 100% कर डाला। लियू में सिर्फ मिनलिन और सी ऑफ क्लाउड ये 3-3% बचा है, बाकी पूरा 100%। चाजम अंडरग्राउंड वगैरह 100%। और तेरे को पता है कितने सारे स्टोरी क्वेस्ट है, मिशन है, हिडन चीजें है, हिडन अचीवमेंट मेरी जिसकी लोगों की एक एक साल नहीं हुई है उतनी हो गई है 488 तकरीबन हिडन अचीवमेंट्स, ऑलमोस्ट 500 होने को आई है। ठीक है, अभी सुमेरु में वो भी हो जाएगी। और अभी मेरे को अनीमो ये बचा था मेरा मॉन्स्टैड, बट अब मेरे को अनीमो क्योंकि कुछ चीजें जेंशिन में जैसा कि थोड़ा टाइम लेके ही होता है, क्योंकि उनको इन्वॉल्व रखना है प्लेयर को जब तक वो नए नए कंटेंट निकालते नहीं। तो वो जैसे तुम जब एक्सपीडिशन अपना रेपुटेशन रिवॉर्ड मिलेंगे, फिर तुमको अनीमो ट्रेजर का कंपस मिलेगा, फिर तुम कर पाओगे। तो अभी उसमें इसलिए मेरा स्टारफेल ही बचा है, स्टारफेल भी बचा है। सीधा सुमेरु, उसके बाद सीधा सुमेरु। हाउस टूर क्या देखना है रे, गरीब का घर झोपड़ी। मैंने नहीं किया इनाजुमा ज्यादा, इनाजुमा अच्छा, हाँ। तो वही है कि इनाजुमा तो एक एक आइलैंड है, तो वो 100% करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई। लीव है 100%, मेरे को ओसीडी है, ऐसा कुछ दिखा ना तो वो लगता है 100% होना चाहिए, वो ओसीडी प्रॉब्लम है मेरा।
तो ऐसा है। तो इतना फास्ट निपटाया ना मैंने। ड्रैगन स्पाइन में भी मेरे को पता नहीं क्या ही चीजें ऐसी बची है जो 96% पे अटका हुआ है। थोड़ा इसके बॉर्डर बॉर्डर, क्योंकि बीच वाला जो एरिया है ना, ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये काफी किया, काफी पूरा ही कर लिया। 96 मतलब सभी कर लिया होगा ना। बट ये जो बॉर्डर वाले एरिया है ना, ये बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ये सब बॉर्डर बॉर्डर एरिया थोड़े छानने पड़ेंगे। और 4% के लिए मेरे को, क्योंकि ये जो फ्रॉस्ट बियरिंग ट्री है ये भी मेरा फुल हो गया है, ये भी लेवल 12 हो गया है। हाँ iPad 6 वाला, क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है। ओवर एक्टिंग के पैसे काटो क्या मेरे। वो तो मैं बोला ना, करेंगे अपन, डेफिनेटली करेंगे, कोई टेंशन नहीं उसका। AR कितना है और कैरेक्टर्स भी दिखा दो। AR मेरा 54 है, AR मेरा 54 है। और कैरेक्टर्स मेरा, कैरेक्टर मेरे को 25 खुले हैं, 25 खुले हैं। ये कोहली खुल गई मेरे को, ये तो C2 हो गई मेरी, C2 होने वाली है। एजो, कुकी, आरा ताकि ये मेरे को एक 5 स्टार है। काजुआ बहुत चिकटपना करके मैंने निकाला, एक 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 काजुआ के बैनर पे। जैसे जैसे 160 प्राइमोजेम होते थे, ले विश ऐसा कर करके काजुआ निकाला मैंने। यान पे सबको स्टार्टिंग में मिल जाती है। डियोना मेरी C3 हो गई है, C3 हो गई है डियोना, जो कि उसकी शील्ड बहुत काम की है। कचिंग की तो बात ही मत कर। अभी जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ ब्रो, इतना बुरा हुआ, 10,500 ये 100% जो दिख रहा है ना, ये काजुआ वाजुआ खोलने के बाद 10,000 प्राइमोजेम बचाए थे। जोंगली बैनर पे मारा, कचिंग निकली भाई, 10,000 खर्च करके कचिंग निकली। दुखता है ब्रो। अरे कुलदीप आ गया है मेरा भाई, मेरा भाई। यो अबिस टाइम, यो अबिस खेलेंगे, खेलना है मेरे को, भी टेस्ट करना है। और डेंड्रो एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए अबिस, कोई भी तुम्हारा गेम, पूरा तुम्हारा अकाउंट की पूरी स्ट्रेंथ, तुम्हारे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए अबिस ही बेस्ट है। वो एंड गेम भी है और वो टेस्टिंग के लिए भी दी बेस्ट चीज है। तो इतना बुरा हुआ भाई मेरे साथ, बुरा अनुभव था वो मेरे लिए बाय द वे। फिर मोना रिसेंटली खुल गई थी मेरे को, तो उसने भी मेरी पीटी सेट रीसेट कर दी स्टैंडर्ड बैनर की। वो एक गलती हो गई मेरी कि मैं वो स्टैंडर्ड बैनर के साथ साथ में मार रहा था, ये सुमेरु आने के पहले तक के। चीची भी स्टार्टिंग में खुल गई थी मेरे को जीन बहुत पसंद है, सुक्रोज बहुत पसंद है, डीलक बहुत पसंद है। आई गेस जो तुम्हारे पास रहते नहीं हो तुमको ज्यादा ही पसंद रहता। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट। निनगुआन का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे निनगुआन। बेनेट भी मेरे को रिसेंटली खुला था, बट उसको मैंने बहुत जल्दी अपग्रेड किया। और फिशल जो है वो तो मैं हमेशा से बोलता हूँ हिडन 5 स्टार कैरेक्टर है। थैंक यू सो मच फॉर द लाइक गाइस, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। चैनल ग्रो करने में हेल्प होता है तुम्हारे छोटी छोटी चीजों से, थैंक यू। वही तो भाई है जेंशिन का पेन जो है, वो जेंशिन वाले अपने ब्रदर इन ही समझ सकते हैं। मैंने अकाउंट तो बना लिया ट्विच पर। अभी आपका नेम क्या है चैनल का, बस मेरे लिंक पे जाके ये कर देना, ट्विच के लिंक पे क्लिक कर दे, द प्राउलर द ट्रैवलर करके उस पे। क्योंकि क्या है, जेंशिन ही करने वाला ना उस पे मैं स्पेसिफिकली, जिनमें 5 चैप्टर्स करके आया। हाँ ये हुई ना आदर्श मेरे भाई, कोई बात ये हुई ना मेरे बात। जेंशिन के चैप्टर्स के बारे में बताओ यार, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। आराताकी इत्तो की जगह जोंगली निकलते। अरे आराताकी मेरे को पहले ही निकल गया था ना काफी, इसीलिए तब जोंगली बैनर आया नहीं था। जोंगली बैनर का रीरन तो अब भी आया ना, 1 साल के बाद आया शायद वो, तो वो तभी भी वो निकल गया। वो तो ऐसी नॉर्मल विश जमा हो गए थे, मारते रहा, निकल के एकदम रात को एक नींद में ऐसा विश किया, आरा ताकि ऐसा गोल्ड चमका, मेरी आंखें चमकी पूरा गोल्ड, मैं बोला भी। और आरा ताकि आया, और आरा ताकि मेरे को बहुत ही कूल लगता, क्योंकि वो ही हिट्स लाइक अ ट्रक ब्रो, ही हिट्स लाइक अ ट्रक। थोड़े और 9 लेवल के 10 लेवल के टैलेंट पे तमाशे करना चालू कर देता वो। तो निंगवान का जन्मदिन है, बस इतने हैं। तिनारी बैनर पे मार देता यार, जोंगली का रीरन है, तो उस पे तिनारी कैसा है कि सिस्टम चाहता होगा कि तिनारी जो है वो नया है, लोगों को मिले, थोड़ा उसका गेम प्ले एंजॉय करे, स्ट्रीमर्स को मिले।
तो वो लोग थोड़ा सा ना ऐसा कर पाए कि उसको और थोड़ा प्रमोट कर पाए, तो मेरे को ना उसके लिए ही जाना चाहिए था। बट जोंगली का जो है भाई, जोंगली वो अलग ही है। 60 प्रीमोजियम इधर मिल गए, एक विश करके गेम चालू करेंगे। एक एक विश टिकट से अभी करना पड़ेगा यार। 10,500 वेस्ट है वो। कचिंग की कॉन्सलेशन 1 के लिए वेस्ट है ब्रो। वो शॉप से शांगचू ले लेना नेक्स्ट मंथ ओपी कैरेक्टर। भाई शांगचू इज वन ऑफ अगेन 4 स्टार है, बट इंसेन है, इंसेन। हाय हेलो फ्लैश, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। फ्लैश इधर भी आ चुका है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर भाई, थैंक यू फ्लैश यार, थैंक यू फ्लैश। जस्ट फॉलोड माय ट्विच चैनल एंड इस इमोजीज भेज रहा है। ट्विच हैज रियली कूल इमोजीज बाय द वे, मस्त मस्त है। थैंक यू सो मच फ्लैश फॉर कमिंग ओवर एंड फॉलोइंग योर एवर डाइंग सपोर्ट है कुछ लोगों का मेरे को स्ट्रीम पे। जाने दो, अब साइनो निकालेंगे साथ में। चलो लागू है, चलो लागू है। मेरा तो अभी ऐसा है कि मेरा इतना दिल टूट गया है, इतना दिल टूट गया है कि मेरे को ऐसा है कि एक विश भी आई तो मैं एक एक बैनर पे मारते रहूंगा, ऐसा हो गया है। अब मेरे को जमा नहीं करना है। जमा किया था भाई, बहुत ही दिल लगा के जमा किया था 10,500 प्राइमोस। F2P के लिए बहुत बड़ी बात है 10,500 प्राइमोस। सोच रहा है 178 चेस्ट मैंने गोल्डन एप्पल आर के पहले वो से जमा किया था। 178 182 टोटल चेस्ट थी। तुम सोच रहा होगा बार बार वही जगह विजिट कर करके क्या छूट गया, क्या छूट गया। कितने गंदा लेवल का ग्राइंड होगा वो, समझ रहा है ब्रो। तो मेरे को काजुआ और आरा ताकी से मैं बहुत ही खुश हूँ। 1 रुपए का प्रॉब्लम नहीं है। सिंपी नाइस। मेरे को बहुत कूल है यार इमोजी स्विच पे। नाइस। साइनो यार, साइनो भी अभी एक नया ही बूम आने वाला है यार, क्या ही बोलने का। सेव कर लो साइनो अल्हाइतम जैसे कैरेक्टर आने वाले। क्या सेव करे यार अभी, क्या कितने है, तिनारी है, वो है, मतलब किसके लिए सेव करेगा यार एक गरीब F2P का। गारंटी 5 स्टार है वो तो है। मैं तो सोच रहा हूँ तिनारी क्या मालूम अभी यार। 114 है अभी, क्या है थोड़े से मेरे ख्याल से। और कितने बच्चे, 2, ये 10 10 20 और 40, क्या पता होंगे क्या 160। ऐसे ही करना पड़ेगा। डेंड्रो 5 स्टार कैरेक्टर बहुत जरूरी लग रहा है अब मेरे को, बहुत जरूरी। जोंगली तो है ही यार इंसेन, क्या ही बोलने का। अब बहुत बुरा किया मेरे साथ अभी। मच्छिया भाई, मच्छिया 500 पकड़ लिया है तुम्हारे भाई ने 2 महीने में। 500 मच्छिया किसको बोलते, कोई आइडिया है क्या? ये काजुआ ने तो मेरा जो गेम अपलिफ्ट किया है ना, क्या बताऊं मैं तुमको। अबे यार वो टूट गया साला, गया क्या वो भी। चलो अच्छा है। डैमेज देखना, टैलेंट लेवल 1-1 पे कितना अच्छा है भाई। बहुत काम का होने वाला है अब ट्रैवलर। डेंड्रो रिएक्शन से लो, डेंड्रो रिएक्शन बहुत सही है। एक अनिमोर अब सकते हो तुम। अब मैं इसको चार्ज नहीं कर रहा ना, नहीं तो ये एक साथ फूट जाते। ये है ना अपना, अब करेगा वो। डेंड्रो रिएक्शन देखो तुम, सिर्फ एक से एक है। बहुत ही हैवी डैमेज है डीलर पे। खत्म हो गया वो। बहुत सही है। ट्रैवलर का भी बहुत काम पड़ने वाला है। गान्यू के लिए ट्राई करना भाई, गान्यू भी अमेजिंग है यार। क्या ही बोलूं, क्या डैमेज है, क्या डैमेज डीलर है वो। तुम एक क्या टूर्नामेंट से अभी तो किया था ना, नहीं किया था क्या? वहां से कहीं और चले गए थे क्या? ट्विच पे क्वालिटी कम करने का नहीं है। हाँ नहीं, नो वरीज। तूने आके बस वहां पे इतना अकाउंट बनाया भाई मेरे लिए, दिल बाग हो गया। और क्या ही चाहिए, चुम्मा इंसान है तू। थैंक यू सो मच। Time to go. वही ना,
वो मेरे स्ट्रीम पे भी तो बाहर देता है, क्योंकि वो भी तो देख रहा हूं मैं साथ साथ में। मैंने काजुआ मिस किया जोंगली के लिए। अच्छा भाई, पर वही है ना, काजुआ का ऐसा है कि काजुआ जो 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 गैदर करता, मतलब अनीमो का वो जो है ना कि क्लस्टर करता, वो बहुत ही सही है। काजुआ बहुत ही, मतलब बहुत ही दिल खुश हुआ है मेरा काजुआ की वजह से। और जो उसकी स्टोरी क्वेस्ट है वो भी मेरी फेवरेट बन गई, उसके उसके आने के बाद खेला मैंने। और उसकी जो तलवार मिलती है उसको स्टोरी में, वो भी मेरी फेवरेट बन गई, 4 स्टार फ्री वाली। गलती सेव कर लो, नहीं तो गलती से कोको में निकल गई तो डबल दुख। अरे भाई 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 कुलदीप मेरा जेंशिन अकाउंट ही खराब कर दो यार। गालियों यार, गालियों मेरे को भी बहुत सी लगती चल, अमन को हंसा दिया भाई, एक टास्क आज का सब गोल पूरा। ये क्यों इतना दूर है भाई, ये क्यों इतना दूर है डेली कमीशन। टंग 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 टंग। Follow the wind. भाई इसको भी जब पहली बार पूरा मारा था ना, इतनी खुशी हो गई थी, क्योंकि ये भी मरे नहीं मरता था। 2 बार मैं बोल सोचता था कि 1 मिनट में इसको मारूं, तो मारूं कैसे 1 मिनट के अंदर 2 बार। सिम बोल रहा है उधर जाके साला फ्लैश। करना क्या है, करना क्या है भैया। टावर भैया, Wings of darkness, come! As one with wind and cloud. अच्छा ये वाला टावर। Ganyu and Kazuya won't be any good for the next 4-5 patches. राइट राइट राइट, क्योंकि डेंड्रो के साथ रिएक्शंस नहीं है ना, और अभी डेंड्रो मीटा चलेगा, थोड़ा प्रमोट तो करना ही है। तो एग्जैक्टली परफेक्टली सही बात बोला है कुलदीप ने कि उनका नहीं रहेगा उतना माहौल, क्योंकि डेंड्रो के साथ अनीमो रिएक्ट करता ही नहीं है। राइट, तो अभी उसका इतना माहौल नहीं रहेगा। क्रायो के साथ भी नहीं करता है वो, वाटर और ये अपना हाइड्रो और पायरो के साथ है मेन रिएक्शन, और इलेक्ट्रो के साथ उसके। तो वो इतना मीठा है तो चलेगा नहीं वो। हो गया कंप्लीट। Wind Strider. Time to go. सही बात है। मैं हाँ, नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, सही है सही है, अच्छा है अच्छा है। पढ़ाई और ये सब चीजें, अपना एंटरटेनमेंट बस अच्छी से बैलेंस करने का, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, अनलेस तुम प्रो प्लेयर बन गए हो। न्यू कैरेक्टर देख के कंफ्यूज हो रहा हूँ, रेडन के लिए सेव क्यों करूँ यार। भाई रेडन भी है बहुत है, मैं वही बोल रहा था यार, अनुभव चीजें ऐसी ऐसी है बनाई है कुछ कुछ गेम में काफी सारी। अभी तक तो 2 साल हो गए ना गेम को, जो स्टार्टिंग से कर रहे होंगे उनके लिए अलग बात है। तो वही है किस को लिए बचाओगे, ऐसा है तो तुमको चूज करना ही पड़ेगा। व्हाट डू यू लव द मोस्ट। अच्छे नहीं लगे मेरे को, ओके बट लाइक आई थिंक कि हो सकता है लाइक इट इज सूनर टू सून टू, शायद तेरे को पसंद आने लगे कुछ कुछ, क्योंकि बहुत हैवी डैमेज डीलर है वो, और वो एओई डैमेज करते हैं। तो क्लस्टर जो रहेंगे ना बड़े बड़े ग्रुप्स, वो करने के लिए बहुत सही हो जाएगा स्पाइरल अबिस में। डेंडो रिएक्शन अच्छे नहीं लगे ना। अभी मैं थोड़ा अभी एक क्लास लेने वाला हूं मैं ये स्ट्रीम पे,
जिसमें थोड़ा डेंड्रो रिएक्शंस के फोटोज जमाए हैं, मैं डेंड्रो नहीं, ओवरऑल पूरे रिएक्शंस के छोटे छोटे वॉलपेपर्स है जो तुम बहुत सिंपली अंडरस्टैंड करा देते कि रिएक्शंस कौन से रहते हैं, कैसे कैसे Thank you for रिएक्शंस होते complete. हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छी आइडिया लग जाती है, और फिर तुम उसके हिसाब से टीम बनाओगे ना तो फिर अच्छा ही परफॉर्म करेगी तुम्हारी टीम। 164 हो गए। बोल कुलदीप, जोंगली के लिए ही जाऊं क्योंकि मैंने बीच में इसके लिए कर लिए थोड़े, बट अभी क्या मतलब, अभी तो मेरी पीटी रीसेट हो गई ना यार उस चक्कर में, वो तो हुए ये कचिंग बेशरम। 3 ही है। अबे भाई डियोना को क्या C6 कराते क्या यार, C6 कराते क्या अब मेरी डियोना को F2P में। क्या ही बोलने का भाई, क्या ही बोलने का। डियोना भाई, डियोना जोंगली चाहिए ना, बोले जोंगली चाहिए ना तेरे को, बोले शील्ड के लिए, ये ले बोले तू डियोना। गरीब ऐसा बोल रहा है, होयो ओवर डायरेक्ट बेइज्जती कर रहा है, धमकी दे रहा है भैया। धमकी क्या कर रहा है, दे रहा है, कर रहा है वैसा। ये देख कॉली, अभी कॉली मेरी हो गई है C1 और अभी ये C2 हो जाएगी जो फ्री में मिलेगी। हाँ ना यार अनुभव, क्या बोलने का, भी तुमको हंसी आ रही है यार, अपने का गम के आंसू निकल रहे यहाँ पे। देखना भाई C4 हो गई है, C4 विद इन द रेडियस ऑफ द सिग्नेचर में डियोना चार्ज टाइम फॉर एम शॉट इज रिड्यूस बाय 60%। डियोना का जो नॉर्मल शॉट ही नहीं मारते कभी, लेवल 1 के ऊपर कोई बढ़ाता नहीं, क्या करूं ये C4 का मैं। यानी ऐसा है कि बहुत पट से तुम फ्रीज इंप्लाई कर सकते हो डियोना से, इंप्लीकेशन फ्रीज का बहुत फास्ट कर सकते हो, क्रायो का वी मेटा वेरी सून। आई मोस्ट प्रोबेबली ब्रो, मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी ऐसी मजाक कर रहा था, बट मेरे को डियोना बहुत सही लगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार बहुत ही खत्म है, बट जैसी मेरे को थोड़ा 2 महीने से ही खेल रहा हूँ, गेम की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो मेरे को समझ में आया कि डियोना बहुत सही कैरेक्टर है। इससे देख मैंने उसका सिग्नेचर में 7 भी कर दिया, और ये जो है ये अभी मेरे को उसके बाद अभी बढ़ेगा, एसेंशियल लेवल 3 पे इतना चलेगा उसका टैलेंट। देख अभी तक तो ये टैलेंट इसका ये भी पैसिव टैलेंट भी मैंने ये नहीं किया है। 10% डिक्रीज अटैक फॉर 15 सेकेंड, तो एनिमी जो आएंगे उसके इतने बड़े सर्कल में उनका अटैक भी डिक्रीज हो जाएगा, वो भी सही है। क्रायो इम्प्लीकेशन भी है, शील्ड भी है, हेल्थ जनरेशन भी है, HP जनरेशन, हीलर भी है, तो मतलब बहुत कड़क यूनिट है डियोना, बहुत कड़क यूनिट है डियोना देखा जाए तो। बट भाई C4 मेरा और कोई कैरेक्टर नहीं है, और बहुत लेट खुली है मेरे को डियोना। C4 और कोई कैरेक्टर नहीं है, बट F2P के हिसाब से और 25 कैरेक्टर के साथ अगर मैं बोलूं डियोना अब भी इसमें काम आएगी, डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली विल बी मेटा वेरी सून। ये कुलदीप के प्रिडिक्शन, कुलदीप का मेरे ख्याल से वो AR बहुत हाई है उसका, वो बहुत टाइम से खेल रहा है, तो वेटरन है वो एक, और मेरे चैट में वन ऑफ द, उसका प्रिडिक्शन सही है, और मेरे को है डियोना पसंद ही है, मेरे को हो गई है उसकी शील्ड। जोंगली नहीं तो डियोना से ही काम चला ही लेंगे, जो बोल रहे हैं वो कर ही लेंगे होयोवर्स वाले। ये देखिए तो ठीक है, ताजुआ का तो C0 है, इसका C2 है मेरा थोमा, चोमया साला थोमा। C3 है मेरी, ये C3 है मेरी फिशल, हिडन 5 स्टार है वो 4 स्टार के रूप में। आपके वर्ल्ड में आओ क्या, अपन खेलेंगे साथ में, अपन खेलेंगे। अभी क्या ये सब करते रहूंगा तो तेरे को भी खड़ा कोई ऐसा रहता, फिर वो कोई मतलब नहीं आता उसमें। ये C0 है ठीक है, और ये C0 ही रहे चीची तो ठीक है। ये क्यों C1 हुई, इसने जगह छोड़ी यार, जोंगली की जगह छीनी यार। जोंगली मिल जाता ना भाई, मजाक नहीं करता। अभी ये 40 लाख कितने है वो, 0 1 100 लाख 10 लाख 40 लाख है ना, ये पूरे 0 कर दिया रहता मैंने जोंगली के लिए, 0 सब लगा दिया रहता। हेजो C1 है, जितने खुले हैं उसका C1 C2 खुले ही है मेरे को,
मोना मेरे को रिसेंटली खुली थी। निंगुआन C1 है, निंगुआन C1 में ही काम की है, C1 में ही काम की है, क्योंकि उसका AoE डैमेज हो जाता है। व्हेन नॉर्मल अटैक हिट डील्स AoE डैमेज, जो उसका C1 के बिना है नहीं, जो उसका C1 के बिना है नहीं। बाकी ये अपनी, इसको बनाएंगे अपन 5 स्टार के लेवल का, 6 स्टार के लेवल का बनाएंगे डियोना को। डियोना इज मच बेटर देन जोंगली एज अ टीम प्लेयर। ट्रू, सपोर्ट कैरेक्टर में तो नो डाउट, नो डाउट। जोंगली का ऐसा है कि उसका जो पत्थर बनाने वाला है, फिर उसकी जो शील्ड है वो बहुत ही फाड़ू है, और उसका एचपी उस पे स्केल होता है, एचपी पे स्केल होता है ना उसका शील्ड, तो वो है। इसकी भी एचपी पे स्केल होता है मेरे ख्याल से डियोना का। C4 नाइस, कोई कुछ जम कैसा लग रहा है। केया तो ये जो है वो बहुत कम मिलते। कुकी मेरी C2 है, जो कि वो भी अभी मीटा में आने वाली है बाय द वे, क्योंकि वो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रो अपना देते रहती है इम्प्लीकेशन, थोमा और ये थोमा पायरो और ये इलेक्ट्रो, ये जो ओवर द पीरियड देते हैं ना, तो वो क्लस्टर जमा होते हैं, डेंड्रो कोर्स जो है ना वो जमा होते हैं। वो जब एक साथ फटेंगे तो सीधा खत्म हो जाएंगे सामने वाले एक साथ, जितना भी गुच्छा रहा। Zhongli is good with favorite lance for generating particles. Fave lance ये क्या है? Fave lance ये क्या है? Lance क्या मतलब? 4 स्टार क्यों नहीं लेते? 4 स्टार वो अपने इक्वेंट फीट विशेष, अरे वो खत्म होगा, वो तो स्टार्टिंग में ही ले लेता रे इंसान एकदम। अपनी बारबरा C2 है, इसीलिए वो मेरे ख्याल से लेवल 60 पे भी अच्छी खासी परफॉर्म कर देती है मेरे लिए। बेनेट का एक ही बार किया था, और नोएल ठीक है, ये ठीक है। ये अपना C3 है भाई। क्रायो मैं शेजनाया वाला हूँ क्या? मैं क्या हार्बिंजर हूँ क्या कि साला मेरे को क्रायो वालों के तुम इतने दे रहे हो कॉन्सोलेशन? बेदो का C1 कब हुआ था भाई? बेदो को शायद मैंने शॉप से लिया था स्टारडस्ट लेके। और ये यान से भी C1 है, यूंजिन भी C1 है, रेजर रिसेंटली खुला है, और कोहली तो C1 हो ही गई है, C2 हो जाएगी। और इसको फिर मैं एक टीम बनाऊंगा जिसमें ट्रैवलर और ये रहेगी, और फिर उसके बाद ये रहेगी, और फिर उसके बाद दोनों का वो एलिमेंटल रेजोनेंस डेंड्रो का बहुत सही है, EM बहुत बड़ा देता है वो। और फिर जब भी ट्रैवलर बिल्ड करोगे डेंड्रो ट्रैवलर, तो बहुत ही काम का रहने वाला है वो भी पूरे सुमेरु रीजन में। और उसमें क्या है, उसका ER जो है एनर्जी रिचार्ज, उस पे काम करना। मैं अभी क्या करूंगा, एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ये सब इंफॉर्मेशन पे, अच्छा, और वो एज अ वीडियो पोस्ट करूंगा। मैं कभी एज अ वीडियो बहुत कम चीज पोस्ट किया हूँ, लाइव ही आया हूँ। फवोनियस लांस वेपन है उसका, किसका? जोंगली इज गुड विद फवोनियस लांस। ओके ओके ओके, कूल कूल। जोंगली के वेपन्स का क्या, जोंगली आ जाता था तो फिर पूरा ही रिसर्च कर लेते थे उसको। बेटर देन कोहली, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। कोहली कैसा है ना, कोहली सपोर्ट रहेगा, और जो ये है ट्रैवलर, उसको सब DPS बना सकते हो तुम, समझ रहे हो? वो सब DPS बना सकते हो तुम, वो चीज है। Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. Diona. C4 Diona साला। अभी बस एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और क्या। शॉप्स में तो कुछ नहीं है रे, शॉप में कुछ नहीं है। अभी वो रीसेट होगा ना, अभी रीसेट होगा ना तब लूंगा। ये 3 ही है मेरे पास स्टारडस्ट। अभी मारे ना, तुरंत ही मारे थे रे। ये स्टार ग्लिटर 3 ही है। ये जो है ना, ये अभी रीसेट होगा ना, जल्दी होने वाला होगा। नहीं बे, 5 दिन है, 5 दिन बाद होगा। ठीक है, बहुत देर भी नहीं है। ये क्या 5 विश तो 5 विश तो ऐसी हो जाएंगे ना। स्टैंडर्ड भी मारते ही चलू क्या?
स्टैंडर्ड भी मारते ही चलूं क्या? स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड भी रीसेट हो ही गया था मेरा। स्टैंडर्ड भी वो मोना की वजह से रीसेट हो ही गया था मेरा। इधर ही होगा रेजर, मोना, रेजर, वही। पूरा ही खाली चलेंगे अब, पूरे ही खाली चलेंगे। अबे 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 अरे मेरे बाप रे, अरे मेरे बाप रे, ओ भाई, ओ भाई, ये क्या है? थैंक यू सो मच कुलदीप ब्रो। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये स्टैंडर्ड बैनर के लिए बच्चा लेना था। क्यों कर रहा है जेंशिन मेरे साथ ऐसा, क्यों कर रहा है? थैंक यू सो मच ब्रो। चीयर, डीलक इज हियर ब्रो, डीलक कम्स होम, डीलक इज हियर। नया एक 5 स्टार आया है। डीलक मेरे को बहुत कूल लगता है, नो डाउट बहुत कूल लगता है। उसका पायरो एप्लीकेशन भी बहुत सही है और हैवी डैमेज डीलर है, तो डीपीएस कभी भी चलता। और अभी जो पायरो और डेंड्रो के एप्लीकेशन है उसमें डीलक तो बहुत ही काम का आएगा। तो भाई ये बात लागू है, जो दो प्यार से स्वीकार है भाई, आने दो, चलता। एक 5 स्टार ही है ना, 100 जो भी बोलो। टू गुड ब्रो। डीलर मेरे को क्या नए का कपड़ों में नहीं मिलेगा क्या? अच्छा, नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, इतना तो करना भाई। 3,500 का है वो आउटफिट उसका नया। वो मेरी जीन्स सस्ती है उससे। डीलक्स कम्स होम ब्रो, डीलक्स कम्स होम। डीलक पे किया थोड़ा पता है मेरे को डीलक का, बट और कर सकता हूँ मैं उसको पता करके। नाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बट इतने जल्दी कैसे ब्रो? इतने जल्दी कैसे? ये क्या है? ये क्या है? ये देखते को मैं बताता हूँ। ये फ्लूट मिली थी मेरे को, फिर ये 3 विश, 3 और ये 5, ये 8, 5, 8 और 1 2 3 4 5 13 विश। ठीक है, 13 विश। और अच्छा, अभी अपग्रेड होने का है, अपडेट होने का है अगला डीलक वाला। 13 विश 14 विश के अंदर। और मतलब अगर मोना से कंपेयर करे तो ये 5 8 विश के अंदर, मतलब ऐसा 10 पुल में 2 गोल्ड आया, ऐसा वाला, ऐसी वाली बात है वो ब्रो। डीलक कॉज यू डोंट हैव पायरो डीपीएस, एग्जैक्टली ब्रो, एंड आई डोंट हैव मच डीपीएस एज इन जनरल, आई वुड से। ठीक है, जियो कैसा है? जियो बहुत सारा नहीं करता है रिएक्शंस वगैरह, तो पायरो का एक हैवी डीपीएस देने वाला ये है। और मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सा वेपन वगैरह सूट करेगा ऐसा। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि ऐसा हो ही जाता है कि तुमको मतलब पूरी कम्युनिटी में इतने टाइम से वो कैरेक्टर्स रहने के वजह से तुमको पता चल जाता है बेस्ट वेपन कौन सा है, बेस्ट आर्टिफैक्ट कौन से है, ऐसा पता चल ही जाता है। बस स्टार्टिंग से जब मैं खेल रहा था, मैं कहीं नहीं कुछ देख रहा था, ना वीडियोस देख रहा था, ना कुछ किसी से देख रहा था, बस अपना गेम खेला हूं मैंने 2-2.5 महीना। तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, और वही असली फन है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी उसमें आने को ना। मेरे को काजुआ का ये वेपन पसंद है जो उसको स्टोरी में मिला, तो मेरे को पसंद है और मेरे को बहुत माल लगता, और वो मेरे लिए इतने कम लेवल पे, टैलेंट लेवल 7 पे वो 15 के डैमेजेस मारता है वो एलिमेंटल रिएक्शन पकड़ो तो और क्या चाहिए मेरे को? किस्मत बदल रही है, अब जोंगली आएगा। अर्ली मेरा भाई अनुभव भाई, तेरे आने से मेरी किस्मत बदली है, तेरे और कुलदीप की वजह से। इसको पिन कर देंगे मैसेज को। आज का मैसेज गोes to अनुभव। डीलक्स cause you don't have pyro DPS। Yes bro, definitely न्यू ये बात। इसको अपन कौन सा देना चाहिए? सरपंट स्पाइन भी अच्छा है ना इसके लिए। देख, इत्तो के लिए तो ये सही है, और ये जो है ये मैंने बना के रखा है, और वो जाता है रेजर पे, पर रेजर को मैंने बिल्ड नहीं किया, रेजर के लिए परफेक्ट है। एक मिनट, ये क्या करती है? वेव स्प्लिटर मैंने पहला बैटल पास लिया था अभी जो खत्म हुआ जस्ट,
तो उसमें मेरे को वेव स्प्लिटर ही सिलेक्ट किया था मैंने। गो टू अबिस ओनली मीटा मैटर। ट्रू ट्रू, दैट इज सो ट्रू ब्रो। तुम्हारा मीटा रहा तो फिर तुम वो तभी क्लियर, फिर तुम थोड़ा सा कम ज्यादा भी रहा, तुमने थोड़ा सा एप्लीकेशंस भी तुम्हारे एलिमेंट्स के अलग कर दिए तो भी तुम क्लियर कर ही लोगे स्पाइरल अभी। सही बात है, 100% अग्री, 100%। ग्राइंड स्टार्ट सर्पेंट स्पाइन दो, सर्पेंट स्पाइन ना, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, सर्पेंट स्पाइन ही अपने पास। रिफाइनमेंट रैंक 1 है, अच्छा 1 नहीं। क्रिट रेट बढ़ेगा ना, सही है, बेस अटैक और क्रिट रेट सही है, परफेक्ट है। ये प्रोटोटाइप आर्कियक है, ये अभी रेजर के लिए सही है बोलते, बट मेरे ख्याल से ये एवरी 4 सेकंड अ कैरेक्टर इज ऑन द फील्ड दे विल डील 6% मोर डैमेज एंड टेक 3% मोर डैमेज। दिस इफेक्ट हैज अ मैक्सिमम ऑफ 5 stacks and will not reset if the character leaves the field but will be reduced by 1 stack when the character takes damage। ओके ओके ओके, सही है, सही है, परफेक्ट है, चलेगा। मेरे पास ये कितने यार, वो अपना क्रिस्टल्स इसके अपग्रेड वाले कम हो गए थे काफी बीच में। अच्छा, ये एक मिसिंग है क्या मेरे पास? ये तो देख, ये कितने मेरे पास 332 है ये मेरे पास। परचेज फ्रॉम द सुवेनियर शॉप इन ल्यूए, वो तो कब का होगा? अगर ये जो है वो फ्लावर नेक्टर, ये तो 2 महीने का काम है भाई, वो समझ के ये करो, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझो कि वो तो हो ही जाते अगर खिलते रहो तो। सर्पेंट फाइन इज द बेस्ट, नो या Dikshita, welcome to the stream. My AR is 54. My AR is 54. But as I was saying just now, that I just started this game spoiler free, just randomly downloaded it and started playing. And this is like 70-80 days I have been playing, I guess. And in that I am AR 54. So that's not bad. And my exploration progress is also pretty impressive, because I did not play a lot, but I played it really fast, through the quests and everything. So, only in my Liyue, only my Minlin and Sea of Cloud is 97%, and in Mondstadt, Starfell Valley is 83%, which is very easy to get 100%. And first of all my Inazumian islands got 100%. So that was very fast. Game subscriber game cubs on weekends bro, on weekends I will do account reviews and we'll play together, we'll farm together, we'll do everything together on weekends, definitely abhi bas like tomorrow and day after, right? So that is much better, because I like what my plan, because since you are in the chat, I'll tell you that while doing this I do certain things very consciously, as in to create content on the way, so that later I just have to clip it out and just post it like that. So that is the reason why that small system is there. Otherwise basically my chat, like my stream is very chill. You can talk about stuff, any stuff, share with me whatever you want. We're just basically chilling here, not very serious gameplay. Well, definitely I am at 0 crystals lol। क्रिस्टल्स की बात कर रहा है ब्रो, क्रिस्टल्स तो कभी देखे भी नहीं अपन ने शॉप में। 2 महीने में, लाइक आई डोंट माइंड बाइंग अ बैटल पास, आई डोंट माइंड बाइंग अ वेल्किन मून एज वेल, बट जब तुम 2-3 महीने से खेल रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है इतना जल्दी इन्वेस्ट मत करो, अनाप शनाप होगा तो अलग बात है। बट मेरा ऐसा है कि इंटरेस्ट हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो अभी मैंने फिर बीपी लिया, क्योंकि उतना मैंने ग्राइंड कर लिया था 50 और उतना सारा मिल रहा था, और मेरे जो जमा हुए वाले इतने सारे जो मैंने जमा किए थे सुमेरु के लिए 10,000 अपने प्राइमोस, तो उसमें थोड़ा सा एडेड हो गया टैलेंट लेवल, मटेरियल, गोल्ड, ये सब अपना ग्राइंड थोड़ा स्वीट हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि पहली प्रायोरिटी उसको मत दो, गेम पे स्पेंड करना बिल्कुल मत देखो, गेम पे स्पेंड करने को। हाँ, बट अगर तुम्हारे पास ज्यादा के है और तुम्हारा एक एंटरटेनमेंट सोर्स है, अगर तुम मूवी देखने जाते हो 1,000-2,000 रुपए तुम पॉपकॉर्न और मूवी में उड़ा देते हो 3 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर एक गेम अगर एक सीजन 1 महीने का होगा, वो तुमको इतना एंटरटेनमेंट दे रहा है
तो फिर एक 450 रुपए उस पे लगाना कोई मेरे को ऐसा बड़ी बात नहीं लगती ब्रो। ऐसी खर्च हो जाते मेरे से, तो एटलीस्ट मेरे से कभी कभी इधर उधर फालतू की चीजों में, तो इतना कोई ये नहीं है। और बैटल पास भी है 900 रुपए का, तो तुमको अगर वो एंटरटेनमेंट वैसा दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। 101 पुल, नो लेजेंडरी, नो जोंगली आफ्टर रीसेट। ऐसे कैसे पॉसिबल है ब्रो? ऐसे कैसे पॉसिबल है? 100 विशेष में तो एक गोल्ड मिलता ही है ना, 100 विशेष में तो एक गोल्ड मिलता है ना भाई। डीलक तो क्या खुला है भाई, इसका तो शॉट बनाने वाला मैं। परफेक्ट परफेक्ट खुला है। भले ही वो ऐसा ये नहीं है बहुत अभी इनमें, पर वो बहुत काम आने वाला कैरेक्टर है अभी भी। तो ये वो सही बोला कुलदीप ने, 100% सही बोला। तो फिर बढ़ते हैं। मैं यार एक यहाँ पे हूँ तो एक ये बना लेता हूँ। मेरा इतना वेस्ट हो रहा है ना, सिर्फ स्ट्रीम पे मैं खेल रहा हूँ तो इतना वेस्ट हो रहा है ना। ऑफ स्ट्रीम जब खेल रहा था ना तो रेजिन बचता नहीं था, और अभी साला रेजिन बच रहा है। वेस्ट हो रहा है उल्टा। और ये भी कितने बना सकता हूँ मैं? 4 कैसे? ऐसे कैसे 4 बना सकता हूँ मैं? 2 तो भी बना के ही रख लेता हूँ। देख 5 लिमिट रहती है ना, वही तो बोल रहा हूँ। ये देख, ये भी 300 है मेरे पास, जो कि पता नहीं मेरे को बड़ा नंबर है कि नहीं। हाय असैसिन्स ब्रो, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। हाउ आर यू टुडे ब्रो? अच्छा असैसिन बोल रहा था क्या? मेरे को लग रहा था कि अनुभव बोल रहा है। भाई कैसे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? 100 में तो एक मिलता है ना ब्रो। वो स्माइली और वो जो एक आंसू है ऐसा वाला, वो इमोजी बहुत मेरा करीबी इमोजी है भाई। वो अपने चेहरे को ही रिप्रेजेंट करता है वो असैसिन। एनीवन कैन हेल्प मी फार्म प्राइमोजेन ग्राइंडिंग, प्लीज ड्रॉप यूआईडी। देख लो भाई देख लो, ऐसा बोल रहा है असैसिन, देख लो। कैसे कैसे दूसरों के इसमें जा जाके लेगा क्या उनके प्राइमोस? ऐसा कुछ है क्या सीन? ले नहीं सकते मेरे ख्याल से दूसरों के आके चेस्ट तुम। म्यूजिक, दिस गेम, ग्राफिक्स एंड म्यूजिक, storyline, characters, and the strategy building. These points are insane. Like हर एक में 10 में से 9 तो दूंगा ही दूंगा मैं। 10 में से 10 में से 90 में एक 5 स्टार मिलता है क्या? मतलब वही ना, 90 के बाद हार्ड पिटी हो जाती है ना, कि 90 के बाद 10 जो अगले तुम्हारे 10 विश रहेंगे उसमें तुमको श्योर शॉट एक है, वो हार्ड पिटी हो जाती है। 70-75 के बाद तुम्हारा सॉफ्ट पिटी हिट करने लगते हो, उसके पहले 50-50 होता है फिर, ऐसा लगता है मेरे को। बट ये मोना के 14 इसके बाद ही मिल गया, 13 के बाद। मतलब वही है ना, दो तुम्हारे 2 5 स्टार एक 10 फुल में आ गया, वैसा हो गया वो काइंड ऑफ। वर्ल्ड में कोई प्राइमोस फार्म कर दो। अच्छा ऐसा ऐसा तेरे साथ वहां पे ग्राइंड करे तेरे साथ फटाफट, ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना, चिल करना, आराम से खेल तेरे वर्ल्ड में, क्योंकि फिर बाद में क्या है ना, कंटेंट नहीं बचता ब्रो, फिर कैसा है बोर होने लग जाता गेम। तो चलो आराम आराम से चलो। ये इससे मेरा ये भी सही हो गया इन अ वे, वो एक ब्राइट साइड है कि स्ट्रीम पे ही मैं खेलूंगा, खेलता हुआ अभी जेंशिन, तो वो भी एक उसका अच्छा पार्ट है। सुमेरु की गलियों में वापस आते हुए, जंगलों में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डीप इन द साउथ इंडियन रेन फॉरेस्ट, ना 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 ना। ये तो अभी तक पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया यार, इतने दिन हो गए, इतना एक्साइटेड बैठा हुआ था सुमेरु के लिए मैं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, छोटे बच्चे की तरह उछलता था मैं सुमेरु की चीजें देख के, और मेरे लिए एकदम फ्रेश था ना भाई। वो क्या कर रहे हैं वो, उसको क्यों सीली को ऐसा, सीली है क्या वो, उसको क्यों ऐसा पकड़ के रखे उन्होंने? इनको सबक सिखा के आता हूं मैं, मेरी सीली को ऐसा बंद रखोगे तुम। जेंशिन की इतनी डिटेलिंग है, और वो ही चीज को बहुत प्यारा बनाती है। और स्टोरी वाइज भी कोई भी चीज विदाउट रीजन है ही नहीं ब्रो जेंशिन में। अबे यार मेरे को लग ही रहा था,
A new job. अच्छा छोड़, पहले इनको पेड़ डालता। अबे बे क्या हो गया ये? क्या हो रहा है? Never यार again. My royal decree. Off with you. Scatter. अबे डीलर को बना के लेके जाना था मेरे को। रुक जा, बनाते हैं अभी। आज वही करना है, डीलर को ही बनाना। As you wish, main डीलर Fräulein. खुला है भाई। I summon thee. Propagate. यार रुक जा, इसमें साजुआ को बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही क्लस्टर में है वो। ये नया कुछ खिलाता है, चीता पॉकेट। ये भी नया लैम्बार्ड, डिलीशियस लैम्बार्ड फिश रोल। आ जाओ रे अब तुम। Spring forth. Fire it up. वो देखो ब्लास्ट हुआ, डायरेक्ट ब्लास्ट करता है पायरो। I got you covered. अच्छा वो अंदर वाले मशरूम भी डैमेज ही देने वाले थे। अच्छा इनको खोदना नहीं था। अच्छा वो भी मर ही गए। मैं जिनको बचाने गया था वो भी मर ही गए। क्या बोलने का। ये भी बहुत कूल लगा। इलेक्ट्रोग्रानम जैसा बिल्कुल भी नहीं है वो, बहुत सही है वो। बस अभी इसको ऐसा कर करके करना पड़ेगा। प्राइमोजन जमा, और कोई तरीका नहीं है अपन F2 के पास भाई। हीलर नहीं है यार कोई। Fallen leaves, adorn my night. Wind strider. ये पहले डेंड्रो दो, अभी वो टैलेंट लेवल 1 पे तो डैमेज कर रहा है, क्विकन हो गया वो, अभी एग्रावेट हो रहा है वो, क्योंकि अभी फिर इलेक्ट्रो के बाद डेंड्रो लग रहा है उसको। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा ना एक चीज, एक वॉलपेपर है मेरे पास 3-4, उसमें पूरे रिएक्शन है गेम के, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत काम की चीज है वो। क्या करो ना थोमा की जगह। हाँ, अरे कल मैं स्ट्रीम कर रहा था ना, तब थोमा लिया था मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने को, चियांगलिंग ही रखा था तब मैंने। एक्चुअली कैसा सीन है, कैसा है अभी जो थोमा है ना वो, थैंक यू सो मच फॉर द लाइफ गाइस, थैंक यू सो मच। वो जो थोमा है ना वो ज्यादा यूजफुल रहने वाला है डेंड्रो के साथ, अगर तू टीम में रख के यूज कर रहे हो तो, क्योंकि जैसा है ना जो ये है ना चियांगलिंग का जो पायरो इम्प्लीकेशन है ना वो बहुत फास्ट है, राइट। और थोमा का कैसा है, थोड़ा ओवर द पीरियड है। तो जब तुम डेंड्रो के साथ तुम ब्लूम दोगे, ठीक है, तुम एक ये दोगे, एक वाटर रखोगे, ठीक है, या तुम पायरो थोमा को रखोगे, तो डेंड्रो कोर्स थोड़े टाइम तक रहेंगे और फिर वो फटेंगे, समझ रहे हो। तो वो जमा होंगे ना डेंड्रो कोर्स जितने, उतना अच्छा, उतना हैवी डैमेज क्रिएट कर पाओगे तुम। तो जो ये है ना थोमा, इसलिए अभी वो इसका भी मतलब वैल्यू रहेगा, क्योंकि थोमा की वैल्यू ही नहीं थी, शील्ड के अलावा थोमा के सच ऐसा कोई वैल्यू नहीं थी, और शील्ड तुमको और भी दे देते, तो थोमा इसलिए कोई यूज नहीं कर रहा था। और कुकी की भी वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि उसका भी ओवर द पीरियड, जिनके ओवर द पीरियड देने वाले हैं ना इलेक्ट्रो और पायरो,
उनकी वैल्यू बढ़ गई। स्पेशली कुकी और थोमा तो वो उसमें बैठते ही है, और दूसरे कैरेक्टर्स के साथ अभी मैंने वैसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। बस देखो और निकलो झरझर। Time to go. इधर भाई भाई बहुत कॉमन ही बहुत मिल रही है। Since there aren't benefits to a life of wandering. वो क्या है, वो अपना वो है क्या, काऊ है क्या, सुमेरु काऊ। थोमा कभी यूज नहीं किया मैंने, तो इतना पता नहीं है उसका। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, थोमा कोई यूज ही नहीं करता ना, इसीलिए उसकी अभी वैल्यू बढ़ेगी, समझ रहे, इसीलिए उसकी अभी वैल्यू बढ़ेगी। पहले तो क्या है कि अभी मेरे को पहले मैंने थोड़ा रास्ते में ही वैसे करना चाहिए। अबे यहाँ था ना कहीं एक डेंड्रोक्यूलस आया था मैप पे। कैसा है जब तुम जब तुम एक एरिया में घुसते हो ना, जितना वो हो सकता है ना, जितना एक्सप्लोर हो सकता है ना, वो उतना कर लेने का तभी एक्चुअली। बट हाँ लाइक थोड़ा तुमको अभी कैसा नया एरिया है तो पहले थोड़े पोर्टल्स अनलॉक हो जाए। अभी तक तो मैंने आर्कन क्वेस्ट चालू नहीं किया है, वो खेलना है मेरे को, उसकी स्टोरी जहर रहेगी। I have been trying some dendro recently. Electro is the most suitable for damage. True. मेरे को भी ऐसा लगा। जो उसका अपना क्या है, उसका क्विकन है और एग्रेवेट है, और एक उसका सब रिएक्शन है। क्विकन उसका मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रो डेंड्रो का। एक मिनट अभी अपन इतना डीप घुसे ना, ये पहुंच भी गया हूं मैं यहाँ पे। ये देख, ठीक है, ये होयो लैब पे फ्लावर फ्लरी करके है। मैंने इसको कमेंट भी किया था कि ये मैं चीज अपने स्ट्रीम पे दिखाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि डू चेक आउट योर प्रोफाइल। तो होयो लैब पे नहीं हो तो होयो लैब पे जाओ, क्योंकि बहुत सारे तुमको प्राइमोजेम्स वगैरह कंपटीशन कम्युनिटी वाइज बहुत अच्छा ऐप है वो जेंशिन के लिए, खासकर जेंशिन के लिए। तो ये एनिमो का है, पायरो, इलेक्ट्रो, हाइड्रो और क्रायो, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। फिर अपना ये जो है वो क्रायो का है। तो क्रायो भी इलेक्ट्रो के साथ सुपर कंडक्ट होता है, इसके साथ मेल्ट होता है, इसके साथ क्रिस्टलाइज होता है और फ्रीज होता है वाटर के साथ, ठीक है। फिर ये तीसरा है, ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल में समझने का तरीका है कि रिएक्शंस कौन से। डेंड्रो जो अपन बोल रहे थे, अभी डेंड्रो के 3 मेन रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रो के साथ, एक पायरो के साथ और एक वाटर के साथ। एक कौन सा है, क्विकन, एक है बर्निंग और एक है ब्लूम। अभी क्विकन के 2 सब रिएक्शन है, एक है स्प्रेड जो कि डेंड्रो पहला उसका ये है ज्यादा डोमिनेटिंग है जिसमें, और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रो ज्यादा डोमिनेटिंग है क्विकन में, तो वो है एग्रेवेट, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले तुम क्या यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है वो। और फिर ब्लूम है, ब्लूम में वर्जन है और हाइपर ब्लूम है, ठीक है। मतलब अगर तुम डेंड्रो और वाटर से, हाइड्रो से कोई अफेक्टेड है और उसको पायरो या इलेक्ट्रो का एप्लीकेशन होता है, तो वर्जन और हाइपर ब्लूम रिस्पेक्टिवली उस पर ये होगा, ऐसा है। डीलक्स बिल्ड करो, मैं खाना खा के आया। अरे बिल्कुल आराम से खाना खा ब्रो, एंजॉय योर डिनर। I haven't tested Dendro that good, otherwise I would have told you in the simpler way. Right. I mean, yeah, I understand what you mean. I definitely understand what you mean. But this also article that I found on Hoyo Lab, which I thought is like good to share with Genshin players, with our community. Really good. Because in a very simple way, like you can understand that this is Dendro. If you are playing with a Dendro character, he applies Dendro.
which then you apply electro, it becomes quicken, which you apply fire, pyro, it becomes burning, and water bloom. So spread, aggregate, quicken के सब ये है, और बर्निंग का सिर्फ बर्निंग ही है, जो कि तो अपन वो डेंड्रो स्लाइम अपना डेंड्रो स्लाइम पे देखते हुए आए हैं अभी तक के, राइट। और ब्लूम है, ब्लूम पे हाइपर ब्लूम और बर्जन है, तो ऐसा है। फिर इलेक्ट्रो का तो है ही, पता ही है। अच्छा, ये डेंड्रो का भी इसमें बताया, देख क्विकन इसमें भी होता है कि इलेक्ट्रो पहले तुम अप्लाई कर रहे हो, फिर डेंड्रो, फिर वो स्प्रेड होगा या एग्रेवेट होगा। और क्रिस्टलाइज भी होता है, सुपर कंडक्ट भी होता है, ओवरलोड पायरो के साथ और वाटर के साथ इलेक्ट्रो चार्ज, क्रायो के साथ सुपर कंडक्ट होता है, सॉरी, और ये सभी के साथ क्रिस्टलाइज होता है, जियो। तो वो है। हाय सिद्धार्थ, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, लेट फॉर दिस केमिस्ट्री क्लास। अरे नो प्रॉब्लम ब्रो, मैं भी बोल ही रहा था कि मैं रिएक्शन पे क्लास लेने वाला हूँ, और तूने एकदम लाइक सेम फ्रीक्वेंसी ब्रो, सेम फ्रीक्वेंसी। अरे सिड, अभी क्या हुआ? डीलक खुला मेरे को, थोड़ा स्ट्रीम पीछे करके देख, डीलक खुला मेरे को। और मोना मेरे को आई थी, और लाइक 13 पीटी पे, लाइक इट वाज लाइक 2 गोल्ड 2 5-स्टार कैरेक्टर्स इन 1 10 पुल, बट इट वाज लाइक मोना मेरे को सुमेरु के पहले खुली थी। ये तिनारी का भी निकाला है मैंने एक चीज, कि क्या है इसका, थोड़ा कैसा करना चाहिए तिनारी को बिल्ड, ये भी एक चीज है, तिनारी का भी थोड़ा निकाला है। अब मेरा जूस ठंडा गरम हो गया रखे रखे। थैंक यू सो मच फॉर द लाइक्स ब्रो। अभी तो सिड का ही आया होगा सबसे लेटेस्ट। थैंक यू सो मच ब्रो। यहाँ कहीं छुपा है क्या डेंड्रोक्यूलस? I only understand one thing, किसका डैमेज कितना आएगा, एंड आई वांट टू नो हाउ टू गेट बिगर नंबर। आई वांट टू नो हाउ टू गेट बिगर नंबर, राइट। देख वो अभी एक्चुअली मैं भी बहुत अर्ली हूँ उसके बारे में बोलना मेरे लिए, क्योंकि मैं भी बहुत एकदम ऐसा वेटरन प्लेयर नहीं बोल सकते उस सब चीजों में, बट डेफिनेटली तेरा जो बिल्ड है ना, तेरा सपोर्ट टीम जो है, और तेरा जो रिएक्शन किस तरीके से यूज कर रहा है, ठीक है, उसकी टाइमिंग, उसका एप्लीकेशन, कौन से का पहले कौन से का बाद में, किसका कौन से कैरेक्टर्स का क्या क्या रोटेशन, ये चीजें पूरा वो डैमेज इंक्रीजर मल्टीप्लायर बनाती है बेसिकली तुम्हारा। वही है जेंशिन, वही है बेसिकली जो एक्शन पार्ट है डेफिनेटली जेंशिन का, वो ही करना है भाई। डेंड्रोक्यूलस बहुत छुपे छुपे है। हाँ, मेरे से थोड़ी छुप पाओगे। इनाजुमा के हर जगह के लेके आए भैया हम लोग, 3 बड़े बड़े एरिया के लेके आए भैया, सुमेरु वालों भैया। डीलक बिल्ड करते क्या थोड़ा बहुत? न्यू 5-स्टार आया तो डोपामिन रश तो होता ही है भाई, होता ही है। गोल्ड वाला निकाला होता ही है। जितना डोपामिन रश हुआ था ना, उतनी ज्यादा जम के चिड़ मची थी जब कचिंग खुली थी अभी मेरे को जोंगली के बैनर में। कहा गया बेटा मुन्ना? लेवल अप करूं क्या इसको? थोड़ा बहुत तो कर ही सकते। अबे
power is necessary if we are to. वेव स्प्लिटर ही सरपंच फाइन ही दिया है ना इसको, ठीक है। इसको एनहांस कर दिया था ना जितना हो सके। ये तो लेना पड़ेगा, तो मिल जाएगा, इसको करके रखता हूँ मैं बाद में एनहांस। आर्टिफैक्ट कौन से अच्छे रहने चाहिए डीलक्स के लिए? सो रीच 84 पीटी। हाँ ना भाई, गॉड जीन। अरे भाई भाई भाई, क्या ही बुरे दिन चल रहे रे जेंशिन के प्लेयर्स के। उनको पता है ना अभी सिस्टम को खर्चा करने वाले गंदा। इसमें क्यों? Guess some use the. Would you like? No, not the just say the word. What you have? They are the darkness that you. I don't like how. और कुछ बच्चा ही था क्या? अबे अबे अब भी किया? अच्छा वो किया मैंने सिर्फ नॉर्मल चैट वाले किया। Will I? Careful! Where did I? There. Let's go. My flame. What? Let's finish this swiftly. हाँ क्रिम्सन विच ना, चलो वो है भी मेरे पास, वो है भी मेरे पास एक्चुअली। मैं वही तो बोल रहा था साला, कोई तो ऐसा पायरो डीपीएस हो जिसपे वो लगा सकूं मैं। ये वाला एनर्जी, ईआर, ईएम, क्रिट डैमेज, डिफेंस। ईआर, एचपी, डिफेंस, ईएम। इससे पहले वाला ही बेटर था। डिफेंस, क्रिट डैमेज, ये ही बेटर है फिर। और इसका क्या बड़ा क्या है? और इसमें है क्या कुछ अपने पास? क्रिम्सन का नहीं होगा इसमें, फेदर नहीं होगा यार। फेदर साले बहुत मुश्किल से मिलते यार। ये तो लावा वॉकर है। नहीं ये भी क्रिम्सन का ही है। नहीं लावा वॉकर अलग दिखता है थोड़ा। ये जो है ये ईएम अटैक, डिफेंस। ये अटैक 7%, अटैक एचपी, क्रिट रेट। ये चलेगा क्यों? एचपी थोड़ा, एचपी बढ़ जाएगा थोड़ा तो चलेगा ही कभी भी। ये है लावा वॉकर, ये चलेगा अभी के लिए फिर। और इसमें क्या है? तो अटैक एचपी, अटैक क्रिट डैमेज, और ये डिफेंस है। ये यही बेटर है फिर। अटैक ही बढ़ाएंगे पूरा फिर, डीपीएस बना रहे तो। आइडिया रीनेम टू सेड। ओके नाइस ब्रो। थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा आंखों को कंफर्टेबल तो लगता है वो। और इसमें भी है क्या कुछ? ये लावा वॉकर का है। ये हस्क ऑफ, ये इसके चक्कर में, ईटों का फेदर जमाने के चक्कर में इतना हो गया। तो इतना ही रेयर है कि क्या ही बताऊं अभी उसका। इसमें भी, इसमें अपन कुछ क्रिट डैमेज वाला लगा सकते फिर से। और क्रिट डैमेज
HP डिफेंस, HP क्रिट रेट, क्योंकि इसका फार्म करना पड़ेगा ना, इसका फार्म करना पड़ेगा। ये तो अलग भी रहा, सर्कलेट तो चलेगा, है ना। ये 4 का एक पीस बन जाएगा उसमें। क्रिम्सन मिलते कहाँ है, देखना पड़ेगा। ग्लेडिएटर्स अटैक, डिफेंस, डिफेंस अटैक, EM अटैक, HP क्रिट रेट। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, वॉन्डरर्स ट्रूप का, मतलब अभी जो ऑप्शन है उसमें से बोल। इस ग्लैडिएटर 2 पीस क्रिम्सन भी चलेगा, राइट राइट राइट, वो भी अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि ग्लैडिएटर भी अच्छा है, एक पंच, पावर पंच थोड़ा वो ये करेगा, बट फिर भी वो मेरे को यार ये करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़े अच्छे वाले और फार्म करना पड़ेगा, अच्छे सब स्टार्ट्स वाले। पहले थोड़े स्टार्ट्स वाले तो लगा दूं। तो ग्लेडिएटर का अपन फिर ये डाल देते, 2 पीस ये डाल देते, पायरो डैमेज। ये क्या पर उसमें क्या होता है, 4 पीस में इंक्रीजेज ओवरलोड एंड बर्निंग एंड वर्जन डैमेज, ऐसा वर्जन ऐड कर दे, देख रहा है अभी उन्होंने। डैमेज बाय 40%, इंक्रीजेज वेपराइज एंड मेल्ट डैमेज बाय 15%, यूजिंग एलिमेंटल स्किल इंक्रीजेज 2 पीस सेट बोनस बाय 50% ऑफ इट स्टार्टिंग वैल्यू फॉर 10 सेकंड, मैक्स 3 स्टार। तो भाई ये तो बहुत जहर हो जाएगा यार, ये तो सही हो जाएगा। ये 3 लगा दिए ना क्रिम्सन के, ये 2 भी पूरा ही, मेरे को तो पूरे 5 एक ही सेट लगाना मस्त लगता। पायरो डैमेज बोनस गॉबलेट ओनली, पायरो डैमेज यार किस था क्या मेरे पास, शायद मैंने शियांगलिंग को दिया था, बट ये डैमेज इसमें रहता है ना, गॉबलेट में। हाँ, ये पर वो वैसे भी 4 स्टार है वो। हाइड्रो क्रायो के भी है। अभी के लिए तो ऐसे ही दे देता हूँ इसको, EM क्रिट डैमेज, डिफेंस, HP। अभी के लिए तो ये तो खाली पड़ा है, इसको अभी के लिए ये दे देता हूँ, फिर क्रिम्सन ये करके और वो ग्लेडिएटर के भी थोड़े करके, फिर दोनों में जो अच्छे सबस्टार्ट वाला है, इफ ऑफ, इवन इफ ऑफ पीस सेट है, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ मतलब समझ गया ना, पायरो डैमेज का ना, हाँ हाँ समझ गया वो। मैं क्रिम्सन का नहीं भी रहा, अगर मैं चारों लगा रहा हूं तो वो पायरो डैमेज का कोई भी देना पूरा था, समझ गया मैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी वो फार्म करना पड़ेगा थोड़ा उसके लिए, ऐसा है। अभी के लिए थोड़ा डीलक को चलाऊ तो साथ में। ये एक वेडिसेंट का बना हुआ है, यही अभी के लिए इक्विप कर लेते टाइम पास। ये 2 चेंज करने के, ग्लैडिएटर, और उसका ग्लैडिएटर नहीं, उसकी जगह अपने को ये लेने का है, पायरो डैमेज, वो भी लेने का है। वो मिला तो मिलता है यार। इसमें देखते ना अपन, डोमेन्स, आर्टिफैक्ट्स, ये वाला है, हिडन पैलेस ऑफ जो चो चो, ये वाला है। करता हूँ इसको, ये सब फार्मिंग वाले काम भी ना, यानी ये है, सुमेरु ही एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ पूरा अभी तक।
धूप आ गई। सब कितना अच्छा। वो अभी मार खाया था ना मैंने। तो वो क्या है? वो वही है क्या? वो जो हवा में उड़ता वाला वही लग रहा है। This is how it must be. What's our objective? Nice. D look. Time to go. Yeah. Ooh, fast है। अबे ये एक भी नहीं है मेरे पास। ये बेनेट वेनेट के पीछे लगाया होगा यार मैंने, शियांगलिंग वगैरह के चक्कर में। इसको भी मारते ना जाके। ये तो बन जाएंगे, ये तो पड़े ही होंगे। ये भी देखना पड़ेगा, ये भी खुलेंगे बाद में। वो जो ये डीलॉक का मेरे को बहुत सही ये लगता था कि उसको जो तीन स्किल्स है ना उसकी, वो बहुत सही चीज है भाई। फट 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 3 स्किल्स इतना सही हैवी डैमेज देते पायरो एप्लीकेशन के साथ। Germinate! Propagate! अच्छा वो उसका डेंड्रोफोर था वो, तो वो क्या सो रहा है क्या वहां पे? ये काऊ के साथ क्या खेल रहा है? ये काऊ भी मारता है साला। मैं क्यूट जब भी करके उसको ये कर रहा था। Okay, nice. Adorn my First time knights, using wind strider. deluxe skill, like yeah, skill, right? भाई आग तो क्या फैलती सुमेरु में झर से एकदम। मेरी मोना भी यार हीलर नहीं है। हाय हाय गुडी बॉय, हाय हेलो। Shadows of fate. चिढ़ रहा है वो, चिढ़ रहा है, देख रहा Leave my है, space. चिढ़ रहा है। अरे 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 गुस्सा आ गया उसका। कहाँ घुस रहा है भाई वहाँ पे? कहाँ घुसता रहा है? जगह भी नहीं है वहाँ पे। मर ही गया क्या? डीलक्स से यूज करने वाला था मैं। अरे बाद में दिखा मेरे को करने के बाद। Wind strider. Fateful offering. अरे ये पानी ऐसा इतना क्रिस्टल क्लियर कैसा है? ये पानी कम होगा यार, ये पानी कम होता होगा कोई मैकेनिज्म से डेफिनेटली। इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे? नहीं तो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि जा रहा तो भी समझ में नहीं आ रहा कब तैरना शुरू कर रहा है वो। Time to go.
कैसे करूँ उसको? वो वाटरफॉल वहां से आ रहा है, वो ही स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है सीक्रेट। Written in the stars. Delved into destiny. Scatter! As one with wind and तुरंत भी हेल्प cloud. खत्म हो गई बेचारे का, बहुत ही कम है। हीलर भी नहीं है मेरे पास। Shadows of fate. खत्म हो गए रे बच्चे तो। Time for retribution! Whoa! Nice. I love it. Scatter! Spring forth! Fallen leaves अरे adorn my गलत night! किया, The stars. मर गई। होना ही था वो। लग भी गया था। Propagate! लग भी गया। Wind नाजू strike! अभी जाने वाला है। कोई नहीं है ऐसी एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। Scatter! अच्छा स्टार्ट करूँ बोल रही है पीली मेरे को। पूरे ही खत्म हो गया। हाँ हुआ पानी कम। हो गया। और एक लेयर कम होना बचा है मतलब। क्या सितार है यार। रुक जाता हूँ यार 1 मिनट यार। अंदर कहीं गुफा में लेके जा रही है यार वो ब्रो। Follow the wind.
भाई ये सुमेरु में बहुत दूर दूर लेके जा रही है इसकी। भाई मार मत, मर जाऊंगा मैं। Wind strider. चलो A reward on the road. I'm here. ई का है। तो ये भी तो यूज नहीं किया यार। अबे चलो ठीक है, ले ले। Propagate! Life goes on. दूसरी बार यूज कर रहा हूँ सिर्फ मैं आज तक। Scatter! हाँ ये मिल गया ना, बस बस बस। ऐसा कुछ रहता है कि जितना अच्छा मटेरियल डालो उसमें उतना अच्छा क्वालिटी का माल मिलता है, ऐसा कुछ रहता है क्या? This is... Whoa! So Paimon wants to go visit the Immortus God. Did you know there are direct people in Sum? It's not Kadito. So... अच्छा है यार ये, इसके लिए तो वैसे भी वेपन के लिए लग रहा था ना वो अपने को। बहुत मांग रहे यार ये मटेरियल ये। ठीक है, अब खत्म हो गए। बनाएंगे बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। डीलक को और कूली को भी बनाना है मेरे को पूरा मस्त। ओ ऊपर वहां कुछ है। ओ ओ क्या हुआ इससे? लोग है वहां पे और एनिमीज भी है। Propagate!
Clouds high. The birds call. Sacred name, fortune preserver. Time to go. Rise. Wind Strider. कितने टाइम तो वो रिमार्केबल चेस्ट ले रही है। अच्छा वो है उसका लॉग। ओके आई हैव 24 वेपन्स एट लेवल 90। 24 बाप रे मेरे बाप रे क्या ही लेवल का ग्राइंड होगा यार। वो एक वही लाइक दैट इज द थिंग कि सर्टेन थिंग इन द गेम दैट यू इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग आल्सो यू हैव बीन डूइंग थिंग्स। तो वो तो है बट फिर भी वो करना वो मानना पड़ेगा। Who says there aren't benefits to a life of wandering? ये एक हुआ है। क्या किया मैंने ऐसा जिससे एक हुआ है? Wheel of life. यहाँ वो कुछ करना तो है यार। वहाँ क्या करना है वहाँ पे? ये भी कुछ दिख रहा है मैकेनिज्म। कैसा ट्रांसपेरेंट पानी है एकदम। ये इसका ही तो लेवल कम करना है यार। यही तो लेवल है वो पानी का। इसके अंदर कुछ कैसे जाएंगे? ये है एक चीज। इसके अंदर कैसे जाएंगे? ये भी है ना ये बिलेट एक ये भी है मेरे पास। तो वो भी यूज कर सकते जब वो डेंड्रो वाले सुमेरु वाले वेपन्स आएंगे फ्री वाले जब मिल लेंगे उस हिसाब से। उसके अलावा भी कुछ बुलेट्स पड़े हैं मेरे पास। अरे शहींशाह यार ब्रो मैं जब से स्ट्रीम कर रहा हूँ ना मैं सोच रहा हूँ शहींशाह आएगा अभी आएगा थोड़ी देर में बोलेगा यो चैट में आके। और वो फाइनली थोड़ा सा देर से ही सही बट हो गया। वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। इसके ऊपर भी कुछ है क्या यार? हाँ ये देखना यहाँ पे नहीं कुछ। What's this? अभी अब भाई ये कैसा? अगर अंदर घुस गया रहता ना हद पार गंदा पजल रहता था। मतलब भाई चीची जाएगी क्या ऐसे? चीची भाई चीची चले गई चीची चले गई वहां से। ये क्या बात होती है भाई? ऐसा कौन पजल देता है? तो गुगली हुई। ये तो गुगली हुई ना मेरे भाई जेंशिन वालों।
ये टूटता है क्या दीवार? नहीं। ऐसा भी जा सकते थे। ओके, ऐसा एक्चुअली रास्ता था उसका। ऑलराइट। तो क्या खुल गया फिर क्या अब? अच्छा, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया तो 2 हो गए। तो मतलब ऐसे और 2 ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ तो पानी ही है, ऐसे और 2 ढूंढने पड़ेंगे मतलब। भाई बहुत डीप। वो चैज़म वैज़म इतना अमेजिंग बना है भाई। चैज़म अंडरग्राउंड है। मैं आ गया, ये बात। तू आएगा फिर ही तो मैं गाऊंगा ना, मैं वापस आऊंगा। मैं वाप 2-3 डेज से मैं आर्कन क्वेस्ट में बिजी था, सो नहीं आ रहे। कोई बात नहीं रे ब्रो, गेंशिन खेल रहा ना, बस वही तो अपन साथ में ही है, ट्रैवलर, फेलो ट्रैवलर। अरे यो वाइपर, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, हाउ आर यू टुडे वाइपी? अरे यार शहंशाह, मैं क्या बताऊं, थोड़ी स्ट्रीम पीछे करके देखिएगा ना। मेरे को डीलक मिला ब्रो, और मेरी वो स्टैंडर्ड बैनर पे मिला, और उस पे मोना मेरी अब भी जस्ट आके गई थी। 13 विशेष के बाद ही मेरे को डीलक मिल गया। ये देख, लेके घूम रहा हूं उसको मैं। अलग ही भाई, अलग ही डीलक दे रहे, कचिंग C1 दे रहे, क्या बोलना। बट ठीक है, डीलक मेरे को पसंद है, लाइक एटलीस्ट था नहीं तो। और अभी क्या है ना, पायरो और डेंड्रो के बहुत रिएक्शन है। मेरे को डेंड्रो से ही खेलने का है रिएक्शन रख के, तो उसमें काम आएगा ही आएगा। और डीपीएस, एज अ डीपीएस, क्योंकि ना तुम्हारा ट्रैवलर तुम्हारा सब डीपीएस हो सकता है, हैवी डैमेज डीलर नहीं हो सकता है। तो एक चाहिए था, वो मिल ही गया। चलो इसका क्या करना है यार, इसको पानी मारूं, इसको पानी मारूं क्या? Wish me luck. अच्छा, इलेक्ट्रो मारना हो सकता है शायद, ऐसा भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रो मारना पड़ सकता है शायद। डीलक को थोड़ा बिल्ड करके और लाऊंगा वापस। चलो डीलक, रेस्ट कर तू, अभी अभी आया, अभी अभी पैदा हुआ है तू, चिल कर जरा। Behold. नहीं, इससे भी कुछ नहीं। करना तो कुछ है। करना तो उनसे कुछ ना कुछ तो है। Let the show begin. ये साला इसमें आके गया क्या क्वेश्चन मार्क में? आर्काइव, नहीं। और एक मार ही देते डीलक की खुशी में, एक है बच्चा तो। अभी वो डीलक के ही असेंशन भी मिला था वो भी। ना, कुलदीप, ट्रैवलर कैन बी सपोर्ट एट मैक। एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली परफेक्टली सेड।
मैं वही बोल रहा था, मैक्स सपोर्ट और मैक्स इवन सब डीपीएस थोड़ा बहुत कर सकते हैं डेंड्रो एप्लीकेशन के साथ, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बट वो बहुत काम का कैरेक्टर रहने वाला है अभी पूरे सुमेरु में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ड्रॉपिंग द लाइक्स यार, थैंक यू सो मच, बिकॉज आई हैड C6 चीची इन माय अदर अकाउंट वेल। अरे बाप रे भाई, मेरे तो C4 ये हो गई यार, C4 डियोना हो गई अभी मेरी जस्ट। 3.1 में एक फ्री का 5 कैरेक्टर चूज कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड बैनर। हाँ मैंने सुना ये न्यूज, मैंने सुना। थैंक यू अगेन फॉर द लाइक गाइस। तो स्टैंडर्ड बैनर मोला चीची जीन कचिंग तिनारी है, ये शायद फेक न्यूज भी हो सकती है ब्रो, ये शायद फेक न्यूज भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तिनारी के बिना तुमको दे, क्योंकि तिनारी दे देना तो मतलब मेरे को लगता नहीं तिनारी दे देंगे वो इतना अभी जल्दी, इतना इजीली। ठीक है, जीन कचिंग ने तो मेरा जोंगली छीन लिया रे मेरे से, मेरा जोंगली छीन लिया। एक औरत आ गई हम दो भाइयों के बीच में। मोना है, डीलक आ गया है, चीची है, जीन नहीं है, जीन मेरे को बहुत पसंद है बट जीन नहीं है, कचिंग है, C1 हो गई है। तिनारी अगर ऐसा फ्री मिल रहा तो तिनारी ही लूंगा मैं, 100% तिनारी लूंगा, फिर मैं तिनारी ही लूंगा मैं। वैसा शायद ऐसा श्योर नहीं है ये न्यूज, बट ये इट्स जस्ट अ ह्यूमर चेंज, इट कैन बी फेक। या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, या एग्जैक्टली। या टुमारो आई विल जॉइन अदर्स वर्ल्ड एंड यू कैन जॉइन माय वर्ल्ड। या इट इज मोस्ट प्रोबेबली नॉट श्योर, but it is like something can be there, like Tinari won't be there, but you can choose a 5-star character. Maybe that is also for not sure, but surely you will be getting tons of wishes. You will be getting like 1600 primo gems, that is like 110 pull, and then more equant fate when you log in and every day something like that. So you will get like lot of wishes, at least 20-25 विशेस यू विल गेट। तो तुम्हारा थोड़ा सा एकदम भी सब नहीं दे रहे, वो थोड़ी पीटी कम करने में मदद कर दे रहे हो, ऐसा है। बट तिनारी आया तो फिर तो मैं तिनारी ही लूंगा, नो डाउट। अच्छा, एक डेंड्रोक्यूलस इधर है क्या? एक ये कर लिया, 2 ये कर लिए और 2 करने हैं इसके। ये अलग रास्ता है क्या? सेम रास्ता है। लग तो अलग रहा है। Hmm. 10 wishes only and 1 4-star weapon only you will get in the 3.1 update. That's what you are saying, Kuldeep. Tomorrow my exam result prowler bro। ये इमोजी है, इतना एकदम चेहरा एकदम परफेक्ट वाला है। 69 I have level 69 जीन। साला कम ऐसा दिमाग लगाएगा, ऐसा दिमाग लगाएगा। 69 जीन है बोलता, मतलब समझने वाले को समझ भी जाए और नहीं समझ वाले को कुछ भी ना समझे। क्यों? Is it disappointing as disappointing as last anniversary क्या? But if you get a 10 pull, like 1600 primo gems is not bad. Plus you are getting like some, I think at least more fight and acquaint this fates. What you call this fates? Yeah. Intertwined. हाँ,
तो थोड़ी पिटी इट्टी कम हो जाएगी। इससे पिछले साल का तो मैंने सुना था डिसअपॉइंटिंग है। इस साल का ऐसा बोल रहे थे कि पिछले साल के जितना इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स सी। अपन क्या है, अपन तो अपने को तो जो भी मिला ले लो भाई। अभी क्या चुपचाप क्या कर सकते। अच्छा यहाँ से मैंने शुरू किया था। ओके दे यार, ये पजल साला आधे अधूरे छूट रहे। और ये तो ग्राउंड फ्लोर पे था। ये टेलीपोर्ट पॉइंट तो ये भी नहीं खुला होगा। नहीं, वो उसी से होगा। योगा से ही होगा भैया। इस साइड तो गए, सामने जाके देखो क्या कुछ अंडरग्राउंड है क्या वहाँ पे। बे ये कब हुआ? स्टैमिना पे ध्यान ही नहीं। ट्रैवलर हैज ड्राउन्ड। ओनली दैट्स इट। अच्छा तो फिर तो बहुत ही सैड है। मेरे को लगा वो अक्वेंट फीट वगैरह देंगे हर रोज लॉगिन करने के बाद एक और फिर आखिरी दिन पे 5 ऐसा कुछ सीन रहेगा। मेरे को ऐसा लगा एक आध हफ्ता चलाएंगे यार। दे नीड टू गिव अ स्टैंडर्ड बैनर 5-star कैरेक्टर फॉर एनिवर्सरी बट दे वॉन्ट इट मीन्स वेल फॉर नीलो। चल ठीक है यार, बनो वेल, क्या कर सकते हैं। Let's dance. नहीं यार, वो इधर ही कहीं रहने चाहिए यार। वो दो भी इधर ही रहने चाहिए यार। ऐसा नहीं होता जंक्शन में। इससे दूर दूर नहीं रहेगा वो पजल का। आगे जाके वहां पे बहुत दूर है वो। वो बहुत दूर है वो कहीं ना कहीं इधर ही होगा वो पिलर डेंडो वाला। और एक आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अयातो बैनर अगेन। ओके अयातो है क्या तेरे पास? तभी लिया था क्या फर्स्ट बैनर पे? अयातो वो कामिसातो भी है ना? I'm so curious, what is this thing? What is that? No rest for the wicked. कुछ तो सीन है डेफिनेटली इसका। Do the quest, this one, the Arkan one क्या? वो करूँ क्या? याद है कामिसा तो आया तो। हाँ परफेक्ट। हाँ वो है यार, स्ट्रॉन्ग तो है वो भी। वेल लोगों को क्या है भाई, वेल लोगों को क्या है। लेते रहो। आर्कन क्वेस्ट बोल रहा है क्या कुलदीप?
First do the Archon quest, then start with the quest called Aranyaka. Okay. ठीक है, चलो आर्कन क्वेस्ट करते छोड़ी। थोड़े क्वेस्ट तो उसमें तो थोड़े मिलते 20-30, 40 प्राइमोस। जैसी 160 हुआ एक तुरंत विश करने वाला मैं तो, क्योंकि कचिंग ने बहुत बुरा किया। कोयो वर्ष ने बहुत बुरा किया अपने। डीलक्स दिया बट यार क्या बोलना है। Through mists of smoke and forest dark, Chapter 3, Act 1. Follow the unresponsive person discreetly. अच्छा यही तो था वो स्टार्टिंग में ही जो मिलता है। You and Paimon arrive in Sumeru and you prepare to find a way to get an audience with Lesser Lord Kusanali. Let's go 6:25. भाई ये बहुत सही टाइम पे आया। इसलिए कैसा है मेरे को ना झरझर मैं 55 वगैरह क्रॉस कर लूंगा। लोगों को वही टाइम लगता था, नहीं तो क्वेस्ट खत्म हो गए तो बहुत मेजर चंक जिससे तुमको एडवेंचर एक्सपी मिलता है वो निकल ही जाता ना यार, है कि नहीं। अच्छा ओके कूल थैंक यू फॉर दैट इन्फो ब्रो। हाँ वैसे भी करने का मेरे को करने का सोच ही लिया था मैंने ये। एक मिनट यार, एक मिनट बस ये शुरू करने से पहले। बस un momento. Número uno esto. Ajá. हाँ हाँ मेरा असली वेल अकाउंट तो डिलीट हुआ है, वो बताया था तूने। लाइक क्ली यूला C2 शोगन C3 चाइल्ड C4 जोंगली, बाप रे C4 जोंगली वगैरह, C6 भूताओ C6। अरे बाप रे बहुत ही बड़ा वेल था यार। तू वेल के बड़े वेल के से भी बड़ा कुछ रहता क्या। और शाओ भाई, शाओ बहुत माल कैरेक्टर लगता मेरे को, बहुत ही माल कैरेक्टर लगता। You will be stuck at AR 55 for at least for a month or two. Yeah, I understand. It's a huge. That's a huge. Like from 55 to 59,
pretty huge. I mean, the अभी कितना है इसमें XP needed? 36,000 नो, तो 55 के बाद बहुत बढ़ जाएगा और मेरे ख्याल से 40,000 वगैरह लगेगा, तो वो जमा करना काफी टाइम कंज्यूमिंग है। यार कुछ तो होगा, तो जेनशिन वालों से सपोर्ट से कांटेक्ट तो कर, उनको बोल तो कि कि मेरा रिकवर कर दो, ये था वो था। वो गुफा है, यहाँ पे गुफा में फॉलो करना है उसको। Huh? She just He walked by six that only small ka, baap re. waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? It looks like she's meditating or something. If we bother her now, she probably wouldn't let us off very lightly. Oh! What a lovely smell! It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical so place sad, to go yeah, home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Huh? What's the matter? You don't look too good. This smell. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. Oh shit! What's happening? I passed out. This is no time for a nap. Oh, come on. Electro. Render. What? Oh my god. Wow. Wow. क्या बोला है? Follow the voice. Follow the whispers. अलग ही कहीं ट्रांस में पहुंच गए अपन, मेमोरी में पहुंच गए शायद अपन, वाया आकाश सिस्टम और समथिंग। Beautiful. World forget me. This was in the trailer also. Yeah, I know most of the people must have done it already. The Traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now?
Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Well, we're at... Good question. Where are we? Jaime was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from SUMERU as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Whoops! Kale, what's the fluffy-eared boys here. Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right, I'll get it for you once I'm finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. What can be? See the starship. You not seen the starship photo. 1 minute So, IP. How are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious Cool earlier. boy. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in Darshan. isolated areas, Darshan hai wo. particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Yes. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you Yes. see anything while unconscious? Kale, let the others know to stop bringing their patrol Kale. logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you.
Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which Yes. suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Whoa, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse You reactions come to this home, kind of smell, Tinari, okay? then I will have you in my team. Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in SUMERU and we're already having problems left and right. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. What's weird? You mean how you're feeling now? Arey YP, what I was saying was कि yeah, you most probably can be right, but again I think that Paimon is the god of time, who everybody thinks is dead long time back. I think that Paimon is the god of time, and if you see this top of her head, that thing, no, that is around Archon god statues, right? And we can literally come in the game itself. We have the clock to go and back and forth in time, right? And that is because of Paimon. So maybe Paimon is the god of time. That thing and the evil god came in the star-shaped portal. Yeah, I mean that is also, but that can represent many things, no? This evil god, but like this kind of star only, the travelers also come, no? My body does feel a little weird, but what I mean is I don't think what I saw were hallucinations. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tighnari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Huh? You mean that Tighnari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, वेलकम that बैक settles it अमन. then. ये स्टोरी We'll शुरू stay है, ये here to थोड़ा सा rest देख up and बहुत सही figure है. out ये what's आर्कन going क्वेस्ट on की with your थोड़ा hallucinations. बीच से है, बट सही रहेगी. मतलब स्टोरी क्वेस्ट इसकी It बहुत सही seems सही like रहती, जो asking आर्कन Tighnari क्वेस्ट रहती might not be an खासकर. option anymore. What do you think we should do? Let's start by having a chat with Cole. Good idea. Kali's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in SUMERU. SUMERU. You get a night of rest. अलग ही hallucination में चले जाता भाई traveler. Come on, ओए, it's time to go find Kali. अपना घर है कि ये? टिनारी ने अपना रूम दिया है अपने को. कुछ प्राइमोस नहीं दिए क्या? नहीं दिए.
All right, next let's see your right hand. Yes, not bad. But please remember that you still need to be careful. Understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one. इसका डेमो So देखे you तो ना won't be अपन ने coming बहुत सी along this कैरेक्टर है time. अभी. Besides, there's a chance we may encounter... Well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Oh. Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. So thoughtful Seems of you, you're not the Paimon. type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Tighnari, we're ready to head out. Tighnari? Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, you can count on me. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Tighnari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Exactly. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Paimon, traveler, this way! Take the You lamp can leave the along the task of path, checking the okay? lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. ये करके आओ क्या 1 मिनट. फिर तुम्हारा स्टोरी क्वेस्ट तुम्हारा लैम्प पैम्प क्या है वो चेक कर लेते हो. Is this an answer from this world? और अमन खाना वाना खा लिया? Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. No problems with this lamp. Good. The Statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. Yes. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale,
Do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. Okay. According to what Masters told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Siristana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Anyway, you two know Amber, right? ये कोहली के डेमो में था. Wait, Amber? You mean... Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... Amber fan Kohli. Typical Amber fan. Sorry. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was Amber rambling इसको on just बचाती है now. जब ये बच्ची It रहती है. must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. बहुत Knowing that you're difficult a part friend of रहता है Amber कोहली somehow का. makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. Paimon. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust, really. I wish I could tell you more about the Dendro Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Suristana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Dendro Archon? So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Background change? क्या background change हुआ रे?
हाँ ना, ये पाइमॉन का भी बहुत क्यूट है और कोहली का भी बहुत क्यूट वॉइस है, नो डाउट। ये ट्रैवलर तो हार्डली कभी बोलता, गिन के अभी तक के इतने पूरे 2 साल में उससे कोई जो स्टोरीज हुई है, आर्कन क्वेस्ट जो है, आई थिंक 2 या 3 डायलॉग बोले हैं मेरे ख्याल से, 3-4 डायलॉग, सब पाइमॉन ही बात करती ज्यादातर। All right, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. आपका मैं अभी नोटिस किया। अरे मेरे को तो लग रहा था सबसे पहले तू ही नोटिस करेगा। मैं बोला भी चैट पे जब तू उस दिन लेट आया था, उसके पहले स्टार्टिंग में बोला था। तो वही है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुआ हूँ मैं क्लीन के लिए। मजा कह रहे अपने लिए या चढ़ना वगैरह। Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue ये फ्लोर भी सही बना है। is small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? यार मानते तो सब उसको ही है। You might be right. The statue does look kind of old. हाँ सही पकड़ा मैंने। Well, anyway, क्योंकि we'll have to मानते figure सब that वो out later. पुरानी लॉर्ड को है जो मर गई या घूम गई। Let's get started on cleaning the statue. मरी गई है Paimon will fly शायद। up and take care of the top, and you clean everything below. Nice work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. हाँ है का कॉली। अरे ये कहाँ नहीं जा सकता मैं यहाँ पे। इतनी गैप रहने के बाद भी घुस नहीं सकता हूँ। ये ठीक करना पड़ेगा। अभी कोई नहीं है, चुपचाप 1-2 स्क्वाडन का मैच खेल लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा भाई, किसी को पता नहीं चलेगा। थैंक यू यार, थैंक यू लाइक के लिए। Yay, food! What kind of goodies did you bring? Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. Whoops! Ah, no! You dropped it on the ground! Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh, Paimon nearly had a heart attack there. पाइमॉन बहुत ही भूखी रहती। Those pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. Oh. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? You don't let you touch anything without his permission. नहीं मिली, बहुत सारे दीवाने हैं all अपने। the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments.
No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. And big ears, Floppy. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. Seems you already know him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his responses. Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on sticking to the path of a forest watcher. Every day he helps the locals of the forest and passes on his extensive knowledge to trainees like me. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tighnari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Yeah, he should come Paimon's home. still kinda upset, though. Please He kept send him. scolding Paimon the entire way here. Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why, is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kali's starting to laugh. That's it! Paimon won't forget this! It's time for some primordial wrath! No! Don't touch me! Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? ये कितना बोलती है? अरे हाँ नहीं, आर्कन जो आर्कन क्वेस्ट रहते ना वैसे लंबी रहते, उसमें कैरेक्टर्स के थोड़ा ऐसा पता चलता है. जो शोज एपिसोड मूवीज नहीं बनाए ना इन्होंने, तो इन्होंने ये चीजों में फिर डाला है. हाँ, वो शांत रहता है, ये पूरी बातें करती है, पूरी गाँव की ज्यादा की बातें भी. उसकी भी बातें और ज्यादा की होती just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. Traveler, you've returned. Yep, we're back. Have you... Oh. Oh, okay. मैं आया थोड़ा 2 मिनट में.
Yo, 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 I am back. I am back, baby. भूख लग गई थी थोड़ी बहुत. मेरे को भूख सबसे ज्यादा बातें करने के बाद ही लगती है. इसमें भी प्राइमोस नहीं है, इसी में प्राइमोस नहीं है. चेस्ट खोल रहा था मैं, खोल के देख रहा था. जान दो बहुत टाइम है. 160 प्राइमोजेम को अब. वेरी लॉन्ग वे फॉरवर्ड. थैंक यू यार लाइक्स के लिए. बोलना नहीं पड़ता, मजा आ जाती. क्या है 8 बजे बुलाया सुबह. नेक्स्ट डे. ये देखिए पाइमॉन जो है ना, इसके पास एक घड़ी है. मेरे को तो लगता है यही गॉड ऑफ टाइम है.
Ah. Paimon was thinking all night about what happened with Partyyy, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Okay. Inari is waiting there for us. Let's go. आज तो ये जितना हो सकता आ गए it's you two. उतार के पहन I लूं was क्या just about to वापस go look for you. पहन लूं क्या वापस just about to go look for you. Huh? Tighnari? What are you doing here? Where's Collei? I came to check on Kallei's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Collei has been dealing with for some time. Collei has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tighnari, what's really wrong with Collei? इसीलिए फिर Let's take this conversation elsewhere. Collei just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. To discuss the details. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Collei told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Collei is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... well, because Collei asked me to. And honestly speaking, I was against Collei revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tighnari, what exactly is wrong with Collei? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of SUMERU. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Collei seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Collei's mother still hoped that there was something out there. She handed Collei over to an organization known as the Partyyy after one of their members lied.
and said they had a cure. What? Okay. The Partyyy? Ah, it appears you are already familiar with them. Of That'll course. save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Partyyy were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Partyyy has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh. Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tighnari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the Traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as Lunar Lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Hey, Tighnari? Where exactly are we going to find this plant? Lunar Lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar Lotus grows in the water. When fully mature, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in SUMERU have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the SUMERU rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tighnari. Scatter! ये पूरा यार ये कोली वगैरह का इसका मटेरियल है, ये सब काम आएगा ये।
बाप रे इतने सारे हैं वाह There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered... Okay. Forest Ranger Tainari. ये lunar lotus है. Fresh Nilut Kala lotus. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Hey Tainari, we found the lotuses you requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! Oh, Amir. Tainari, someone's calling your name. They're dressed like... Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so... Let's go find out what's going on. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading, so we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in SUMERU. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the SUMERU rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. We are more That's than right. that, Tainari. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. कि forest rangers के क्या करेंगे तो मैं यही बोला था Tainari को आएंगे they'll report him then they'll go back and solve the issue. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. That's true, Paimon. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. Tainari के कान कितने सुंदर है. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Sure, let's go. Let's go. Collie.
की भी जगह है। Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Thank you, but I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. Let's go, Tanari. Let's go, boy. My fluffy-eared boy. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Oi. Propagate! Wind Strider! Scatter! Yeah! 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 Oh boy. One shall descend once again. Come on, we can do it. I'll protect us. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. As one with wind and cloud. Odd, reveal thyself! Propagate! It's an aggregate bloom एक साथ.
Now, destroy the tumors of the withering. Nice. We did it! Everything's returning to normal now! Yes, thanks to you two. Nice. We were able to Cool quickly animation. restore this Very area cool back to animation. normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to so quickly cool, clear that yeah. withering Tainari zone, is so it won't freaking be cool. long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many That is plants a in the secret to be rainforest are solved. already in decline, Thank you so much for the like, directly guys. impacting the Means a lot wildlife that depends on those without saying plants. anything. Thank you so much. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? But why's that? I'm still not sure of the exact reason. But it's connected. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in solve SUMERU karna for hai. millennia. The permanent way It's to said that it remove originates from the depths of the world. By the depths of the way, world. have you heard of Irminsul before? Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. You can Okay. basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. Oh. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like Yes. the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Oh. Yes. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we Rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Let's go. सुमेरु के काउस भाग रहे इधर उधर. Oh, Tainari. Thank you all so made much it for the back. like, sir. How did it go? The Withering Zone a you lot. reported has been taken care of. No need to worry. Huh. So this Is that- first phase of Archon Quest is like introduction to Sumeru Oh and no, this Hypatia! Withering and Tinari and Koli, all the character in the banners and all. So What's wrong, Tainari? pretty cool. This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in SUMERU. Oh,
Oh, Is her? it? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read मेरा it. अभी लाइव स्ट्रीम खत्म हुआ 7 बजे से 11 बजे तक. Oof. Oh, Paimon sees Nice. 3 squiggly I lines. hope you enjoyed it, bro. Yes. Amazing. मैं check Allow out me करता to हूँ मेरा explain. stream खत्म करके तेरा. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Thank you for Hypatia so resumed her much for coming meditation. over. उसके बाद She इतना must have करके भी just finished. stream करके It's been भी. nearly 3 And days bro, since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's एक्सो been जैसे sitting लोग there बहुत for 3 genuine लगते हैं days? मेरे को. Hey, Like he wait, also does how that. He did you never know all asked me that to from come just a few over lines or on the I paper? subscribe. You will subscribe to me क्या? ऐसा कुछ Well, नहीं. He just obviously, followed me because even this has when to happened Twitch. before. Followed me there, here also. Last time she drew Without 5 lines, expecting and by the anything time in we return. found her... That feels really Well, refreshing. I'd prefer not to remember that. तो तब Needless to ऐसा say, Hypatia's ऐसा been लगता है कि through खुद worse, but जाके we should और still करो get to सब her as quickly as कुछ. वैसे भी possible. करते हैं but I've और got some लगता है emergency खुद जाके rations करो. set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsul's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? How does Tainari know that? बहुत बड़ा है ये. नाइटबॉट ने पूरे रिएक्शन दे दिया ना तेरे को. फिर भी आर्कन क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ. अच्छा 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 इतना बड़ा है क्या ये? Oh my God. That's correct. Those weren't hallucinations at all. Oh my God, लेके बैठने Though I वाली don't चीज है intend to मतलब. apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. But ये एकदम main story ना, Arkan Quest मतलब सबसे main story, सबसे main. अच्छा, World Quest भी Arkan Quest जैसी बड़े है. ओके. हाँ मतलब huge तो बनाया है उन्होंने. लो बोले, सब complaint करते ना, content खत्म हो जाता हमारे लिए. लो बोले. Here. Take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. No. I should be the one thanking you. You've both been a great... No worries, Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. देखते हैं अभी वही एक्सप्लोर करना है. मेरे को तो बहुत मजा आता है वर्ल्ड क्वेस्ट खेलने में.
पूरी ये स्टोरी लाइन पढ़ने में, सुनने में, मतलब बहुत सारे मैंने स्किप भी किए, बट आर्कन क्वेस्ट वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी होती है गेम की, वो स्किप नहीं करना चाहिए। वो गेम का पूरा ही मजे लो ना, हर तरीके से जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है गेम, उसका देखने का मजा आता है। आप समझा के खेलते हो, सुनने में मजा आता है। थैंक यू सो मच ब्रो, दैट मीन्स सो मच टू मी, दैट मीन्स सो मच टू मी ब्रो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग आते हो, अपना शेयर करते हो, बात करते हो यहाँ पे आके मेरे से, मीन्स अ लॉट टू मी टू ब्रो। ये तो पिन में जाना चाहिए तेरा कमेंट। थैंक यू सो मच। इट साउंड लाइक कितना क्यूट है ना ट्रैवलर भी, देखा जाए तो। और उसका वो वाला देखा था क्या, अभी जो इवेंट आया था, छोटू सा एकदम इधर उधर भागना रहता, पेंटिंग क्रिएट कर। ये क्या है? अभी ये कौन है? अभी ये कौन? ये हर बार इतने सारे ऐसे छोटी छोटू से ये कैसे इतने क्यूट कैसे बनाते हैं जेंशिन यार। ये पाइमॉन भी इतनी क्यूट है, इतने क्यूट कैसे बनाते हैं चीजें। There you are. Hypatia, are you all right? So hungry. So hungry. भूख से है ना, बहुत ही क्यूट है ना वो। एक्सो टू क्यूट ब्रो। बहुत सारे इतने सारे बनाते हैं वो ऐसी चीजें, और वो सभी क्यूट कैसे बना लेते पता नहीं यार। There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Yeah, I need the water. Even I am famished, bro. Wait, why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Withering. Silent seeker of knowledge. Go through the mist, okay? It's the mist. कैसे आ गए? How things out here end up looking like this? Exactly. What happened? And where are we? हाँ ना, ये कौन सा एरिया है? Relax, Paimon. There must be a logical explanation to this, you know. Maybe you're right. Let's go investigate the area. हाय। ये अगर अलार्म रहा ना मेरा, तो मैं सो के ही ना उठूं कि मैं जा रहा था, सुबह कॉलेज जाना है, जल्दी उठते। अरे क्या बात है यार, कॉलेज भी, पढ़ाई भी, स्ट्रीम भी। वेरी गुड ब्रो, एंजॉय, स्लीप वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। यस, सी यू इन टुमारो स्ट्रीम ब्रो, एंड आई विल चेक योर स्ट्रीम आफ्टर दिस। तेरा ये टेक केयर ब्रो, गुड नाइट। अच्छा, ये वो हो गया है। Wow, this place is huge. It is. Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Go, Barbara. Wind strike. कहाँ बदले हो गए मछलू? कैसे मछलू थे? जाना तो वही है लग रहा है। अच्छा, ऊपर भी जाना पड़ेगा। सुंदर।
प्यारा. Bouncy mushrooms in domain gameplay tutorial. You will sometimes find bouncy mushrooms of this sort in SUMERU domains. The reasons for which these mushrooms are not one of the Trilakshana creatures are unknown, but must be quite fascinating indeed. Okay. कहाँ है भाई mushroom? ओ ये लेना है कुछ तो ओपन करना है इधर. ओके ये मशरूम तो काजुआ है मेरे पास तो ठीक है. मैं तो कहाँ से जाता हूँ तुम्हें पकड़ ले. तो यही पहुंच गया फिर है. काजुआ की वजह से मजाक में हुआ वो. नहीं तो इधर उधर से कर आके जाना पड़ता था कहीं कहीं कुछ कुछ. वहाँ पे एक चेस्ट है ना. Follow the wind. इसलिए देखते जाना एरियाज में से सब पूरा छानबीन करते हुए. ओए Time to go. ये ऊपर भी लेके जा रहा है ना. Primeval rosin in domains. You will sometimes find primeval rosin and sealed paths that correspond to them with domains in SUMERU. Collect 3 primeval rosins with this domain to unlock the corresponding path. Okay. अच्छा. Okay. Got you, bro. अभी try to get to point 2. What the hell? Huh? Hina को What पहुंचा दिया happened just now? Why'd everything around us suddenly change? हाँ ना. पाइमॉन एकदम दिल वाले क्वेश्चन पूछ. दिल में जो आ रहे. क्या हो क्या रहा है ये सब. भंडी. हेलो. ओके और एक मिल गया. और एक तो वही नीचे था ना. अच्छा ये उधर से आया. ओके
Time to go. Shisha. अरे नहीं रे Follow the wind. काजू ना कैसा करे Ready, steady, go! Fallen leaves, adorn my night! By royal decree! Scatter! Wind strike! As you wish, mein Fräulein. Propagate! As one with wind and cloud! बे रुक जा अरे रुक जा मेरी चेस्ट तो लेने दे ये क्या है ओके how do I get back I have a chest what the hell bro इसका डैमेज होता होगा ना I'll protect us. हद है यार एक तो बड़े मुश्किल से एक चेस्ट मिली थी Time to go. हाँ ओ यहाँ पे अच्छा टेलीपोर्ट है वो इन्फिनोमिया जैसा to the upper level of the tree hollow.
So beautiful, yaar. So beautiful. Whoa. Oh, not this again. What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, I know, right, what's the Funnn? matter? You don't look so good. यही करना होगा और क्या. Something to do with this, right? They showed it. Time to go. Okay. So dreamy. So dreamy. This corridor got open. Silent seeker of knowledge. Wow. What is this? Plant. Huge plant. Flower. Finally a cutscene. Oh my god. Oh my god. Looks like we meet again, Yes. traveler. Ready to die? The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Little one. Bow before the abyss. Let the show begin. Spring forth! La 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 la. Scatter! Oh man. Clouds high. Charge The birds is much come. needed on the Wind Dendro strike. Electro. Yeah, Dendro Traveler. The most important thing is the energy recharge on the Dendro Traveler. See how much energy Propagate! it kills and goes. शहंशाह है क्या? मैं आ गया फिर से डिनर करके. अरे very nice bro. I hope you enjoyed your dinner. Let's dance. Amazing.
Welcome back, bro. क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? मैंने भी एक बीच में ब्रेक लिया था, उसमें जाके मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था हल्का फुल्का। अच्छा ये इसका पानी वाला लगेगा क्या? अरे यार इसके लिए तो फिर अपने को चल इलेक्ट्रो से भी हो जाएगा वैसे। क्या? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Traveler. कहीं से तुमने खेल लिया क्या आर्कन क्वेस्ट? Countless crises before. Your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? This dialogue was also in the trailer. Denial. Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is ऐसी हो गई है क्या अपनी सिस्टर? But don't you fret now. Today will be your last. Now die! What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. Ah, so sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tighnari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tighnari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. I see. Connect me to the tree. So, you're friends of Tighnari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh?
So you're able to see them too? Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the Traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. Ooh. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Oh. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Yes, no doubt about that. By the way, Tighnari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... near to my stomach, you'll be able to hear it. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. Alright, we're up, Traveler. Today's menu will feature Sweet Madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tighnari came to visit. And what was that? Food by the fireside. Okay. Where is the fireside? D-look. What's our objective? Today I got D-look. Make box lunch. What's that? All done! Let's use the empty box that Tighnari gave us since we already watched. Oh, it smells amazing! And the box is a nice touch, too! Let's go serve this up and... Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte.
Even though everything you mentioned was in Tighnari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so, and everyone at the Academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spend their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? Of course, the ingredients used to make Spiritborn eel primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Of course I am. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn eel would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn eel should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa, you're really serious about this whole thing, aren't you? मजाक लग रहा क्या पायमन तेरे को? मजाक कर I रहे am क्या a हम इधर? researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in SUMERU have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa, so knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risks, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself, and they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in SUMERU can ever dream. Huh. Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in SUMERU. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams.
The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life, I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. Nice. Go, eagles fly away. Fly away. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Sure, why not?
Think about it, Tighnari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher, and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kaji clearly stated, your presence and guidance in SUMERU City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tighnari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause a scene. Sage Kaji, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tighnari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kaji? You'll know once you've arrived in SUMERU City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tighnari, but you... So be it. Come, Ghulam, we're leaving. Ghulam. Taj. Oh. Oh. नजरों से नजरें मिली. Tighnari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to SUMERU City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to SUMERU City, correct? That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, nobody knows about know anyone we can try asking in SUMERU City? Nobody. Let me think. My trips to SUMERU City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Immorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter SUMERU City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? Okay. What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of SUMERU's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, SUMERU City! Yay! But wait, before that... That's right! Tighnari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tighnari. All right, let's go! Farewell.
And good luck to you both. Thank you, Tanari. Grab a treat and flame me when I'm back in the city. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to SUMERU City. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. The trail of the god of the wish of wisdom. Single one missing. अरे आयुष जगह है क्या तू? कैसा है मेरे भाई? पता नहीं अभी जस्ट अटक गया था मेरा फेस कैम, तो अभी मैं कनेक्ट कर रहा था तो कुछ इशू हो रहा था. क्या बोलते? विल बी स्लीपिंग नाउ. ओके, गुड नाइट बोलना है क्या? चलो बढ़िया है. गुड नाइट, स्लीप वेल ब्रो, टेक केयर. ये म्यूजिक सोते सोते सुनना चाहिए. SUMERU City! We finally made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting SUMERU City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha.
But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to SUMERU City with a device. Perhaps you too have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within SUMERU's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as SUMERU City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tighnari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in SUMERU. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. Give me that Bluetooth. It kind of looks like a leash. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Ooh. Ooh. Whoa. Just now, something clicked. Wow. And Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know. And bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Ooh. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to SUMERU City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Surasthana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Paimon doesn't sense anything. The Akasha didn't respond to Paimon's question. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Ugh, Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Think why doesn't the Akasha answer my question? Think greater Lord Rukkhadevata. Okay. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like... Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in SUMERU? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. You too? Well, glad it's not just Paimon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us
to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tighnari recommended. He's from SUMERU and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Let's see. Tighnari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. Say something like that about me. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tighnari sent us here and... What? Tighnari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Here! This is a letter from Tighnari! Oh, let me see... Oh! Ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So, you two just have some questions for me? Seems even Tighnari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? Me too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to SUMERU, she's never left the Sanctuary of Surasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. But then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tighnari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. 6 sages are there or what? Okay. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Like who? Add Ashra Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Watch out for pickpockets. How can my own brother say something like that about me? It's plain hurtful. This. Don't forget that. Yes, we must document everything. So this I will continue tomorrow. So keep watching, keep coming over. Thank you so much for coming over, guys. Thank you so much for your like, means a lot.
And we will continue our Archon quest from here. Our adventure with the Traveler and Prowler. The Prowler, the Traveler. So take care, good night. See you later, alligator. Thanks. Don't forget that. Yes, we must document everything.